हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। और भाई एक दिन ऐसा हो सकता है जब आप शांति से जिए व्हेन द ट्रांसफर मार्केट इज ऑन, स्पेशली जब चेल्सी एग्जिस्ट करती है। आई नो वी लव आवर क्लब एब्सोल्युटली फॉर पीपल हु आर चेल्सी फैंस, बट देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड। ऑफ कोर्स इट रिगार्ड्स टू obviously Mason Mount to Manchester United is done, and not just that, of course भाई इस हफ्ते में बहुत सारे चीज हुए। of course Kai Havertz, Kovacic, now Mason Mount, it's finally done, but a lot more। और लिटरली मैं हम बना सकते हैं यहाँ पर 11 चेल्सी प्लेयर्स हु आर एक्चुअली लीविंग और जस्ट अबाउट लेफ्ट। और हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे हाउ डज इट रिलेट टू अदर क्लब्स, व्हाट आर द टारगेट्स। बहुत सारा डिस्कस करना है, कहीं ना कहीं मैं रोज रोज रैंट करके थक गया हूँ, बट कोई नहीं, आज मैं सोचा ब्रेक ले लेते हैं। बट नहीं यार, मतलब मिस्टर फेब्रिशियो रोमानो, हियर वी गो, हैट्स ऑफ भाई। लेकिन एवरीवन इन द ट्रांसफर मार्केट बिलीव वी शुडंट, बिकॉज भाई किसी ने डसा है हम लोग को एब्सोल्युटली। और हाँ भाई, फेक स्नेक्स क्यों एवरीवन? यस, मैं अभी ऑलरेडी देख रहा हूँ कमेंट्स। बिग अप टू एवरीवन हु जॉइन द चैट। भाई सबसे पहले कैन वी हैव एवरीवन लाइक द स्ट्रीम, क्योंकि यार मैं नोटिस किया कल परसों वाले स्ट्रीम में, ऑल्दो यू ऑल लव्ड इट, प्रीटी श्योर यहाँ पर लाइक्स काफी कम आए। तो कैन वी गेट टू द लाइक टारगेट क्विकली गाइस, कम ऑन। और मैंने शेयर किया कम्युनिटी पोस्ट में, आई नीड एवरीवन हियर। आई नो बहुत डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, ऑलरेडी चैट में देख रहा हूँ। देयर आर पीपल सेइंग दैट you know he's not a snake, Mason Mount. There are people saying that definitely all are। मैंने पोल भी डाला है। देखिए फेक स्नेक्स बोलूंगा, that's what it is। I would not say snakes but fake snakes, और मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों। of course also it depends on how we take the responsibility of the board as when it comes to Chelsea or Manchester United in particular, apart from obviously Man City और Arsenal की हम बात कर रहे थे लास्ट नाइट को। but anyway, yes, let's like the stream everyone, it certainly helps। welcome to the stream everyone। हमने बात करना है। जोशुआ तो बोल रहे none of them are snakes। उज्जवल बोल रहे प्राइम हैवर्ट्स इज कमिंग सून, एंड द रेड्स इज लाइक प्राइम माउंट इनकमिंग। कोई नहीं, एनवी नो प्रॉब्लम। रैंड मोड इनकमिंग, ऑल स्नेक्स आर गॉन। भाई टू बी ऑनेस्ट देयर हैज टू बी लिमिट ऑफ द रैंट्स एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स बिगिनिंग टू अफेक्ट मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और आज मैं सोचा आफ्टर यस्टरडेज रैंट आई सर्टनली डिजर्व, यार लेट्स बी रियल, यू गाइस आल्सो डिजर्व सम काइंड ऑफ अ रेस्ट। आराम से मैं डिनर कर रहा था एंड देन दिस थिंग कम्स भाई, डसना। हाँ, जो डसना फील होता है ना, देन यू हैव टू कम। Mount is the best English player right now, and it's not even a debate. भाई मतलब in his position at his age it is comparable, लेकिन हाँ, I would not say that he's one of the worst or absolutely one of the best. ऐसा नहीं कि stand out, is not a generational English player, but he's a definite 7 out of 10 player on average. तो and that is very good. Of course, मतलब no, मैं secret नहीं बोलूँगा यार, absolutely. You all know that. और भाई मैं कहीं ना कहीं yes, द क्या बोलते हैं, मतलब द फॉक्स इज आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आर फैम एंड एवरीवन जो सोशल मीडिया में है, व्हेन इट कम्स टू आर, आई एम टेलिंग टू चेल्सी, भाई मैंने बहुत ज्यादा डिफेंड किया है। लेट्स बी रियल अबाउट इट। आई हैव डिफेंडेड मेसन माउंट, कोवाचिच एंड काई हैवर्ट्स इन पर्टिकुलर टू द कोर, स्पेशली द लैटर। ठीक है, तो यहां पर सच्चाई उगलनी पड़ेगी। भाई मैंने देखा है सेंड वो जो क्या बोलते हैं वो पार्टिंग मैसेज बाय काई हैवर्ट्स। अरे भाई रोना आ गया यार, भाई समुंदर की लहर चल रही है यहाँ पर मेरे घर पे, इतना रोना आ गया मुझे देखकर, साले हरामी, सीरियसली ब्रो। एंड आई नो दैट आई शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर दीस गाइज गेटिंग अस द चैंपियंस लीग। You don't leave the club that you won the Champions League, especially when you're so young, just a couple of years after that. You don't leave it. At least, bhai, definitely not Mason Mount, a common boy, absolutely someone who claims to be bleeding blue, whatever be the reason, yaar, whatever be the reason. Literally, उस रात को छोड़ा है, यर वी उस रात का हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जुलाई 1st बेसिकली इज गोना हैपन व्हाट, पोचेटिनो कमिंग टू चेल्सी। एक रात पहले भाई, लिटरली वन नाइट बिफोर इज व्हाट इज डन। एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब आई वाज हैविंग, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, कहीं ना कहीं मैं अपने आप में बैठकर मैं आई वाज एक्चुअली जस्ट थिंकिंग, भाई what are the options of Chelsea? And I know we are going to be discussing this stream पर, and I know somewhere down the line it's good that it's better to move people who don't want to be 100% here. At the same time we have realized our mistakes and we are starting from scratch. लेकिन कौन है realistic which will get back Chelsea to where we belong? Where do we have such players? Already there are other links going on जो हमें discuss करना है। और मैं कहीं ना कहीं back of my mind I was like, अभी भी यार 2 दिन पहले वो वीडियो किया था ना कि यार पीपल स्टे बैक ब्रो। आई नो कहीं ना कहीं ओल्ड स्कूल है, बट पीपल डू स्टे बैक इवन दो जो हुआ है 6 महीनों में बिटवीन मेसन माउंट एंड चेल्सी फुटबॉल क्लब। ऐसे तो भाई ऐसे एक्ट करे जैसे कि फैंस का कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब नो वन इज अटैच्ड टू मेसन माउंट क्या। बट मैं सोच रहा था भाई देयर माइट बी एक छोटा सा मतलब एक था कि यार नहीं, मेसन माउंट जस्ट अबाउट माइट स्टे बैक। एंड बाय द वे
बहुत sad to say that Ben Chilwell has lost his father. So I did see Mason Mount's comment on that, and I totally get that. But it's not related to transfers at all. This is life, and really, really, sad for that. Rest in peace to Ben Chilwell's dad. But he has lost his dad, and then I thought, okay, nahi, there might be a case where basically such things happen in the team. It's still important to have a Mason Mount, someone who understands the Chelsea DNA, someone who understands English football, to have in the team. अभी भी चांस है, पोचेटिनो 1.5 दिन बाकी है भाई, आ जाएगा, बात कर लेगा, कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं यार, वो है मेरा भाई बद दिमाग है, मेरा बद दिमाग है। बहुत लोगों ने बोला मुझे कि भाई नहीं, इतने सारे हेटर्स थे ऑन सोशल मीडिया। आई अंडरस्टैंड, इतना हेट भी मिलना चाहिए, इज नॉट आउटराइट स्नेक एट ऑल, लेकिन मैंने इतना प्रोटेक्ट किया यार, इतना प्रोटेक्ट किया, सब झूठे वादे थे यार। और मैं काई हावर्ट्स का इन पर्टिकुलर, आई हैव अ राइट, and I have a right to be angry, bro. I have a right than anyone else of you. Bhai, much love to everyone and respect to you all. I have literally met Kai Havertz and I asked him this question. I told him, promise me that you're not going to leave Chelsea anytime in the next decade. Chalobah and Kai Havertz were there. Obviously, they edited that part, Chelsea Football Club. I'm telling you up front. Yes, I'm not supposed to be saying that, but I'm saying it. Absolutely bol diya yaar, bindas. Kai Havertz ne bola hai mere face to face, eye to eye. He has said it to me. He has said it to me, bro. Anyway, Another KDB, Mo Salah incoming Chelsea के साथ हो सकता है पुदिन, why not? Let's see. Thank you for Mount, of course. Prati Pranjal, Manchester United fan in the house. Bhai, congratulations. I cannot stand anything against Manchester United, Man City, and even Arsenal to some extent. As much as मैं कल salty था, आज भी हूँ. लेकिन the reality is that from their end, if we were them, we would have done the same thing. We used to do the same thing when it came to when it came to mid 2000s, when it came to 2010 2005 to 10 पीरियड में हम सेम चीज करते थे भाई, सेम चीज करते थे। दरेन तो भाई आराम से पिज्जा खा रहे, वो तो खुश है काफी दिनों से। दरेन वाज सेइंग दिस अबाउट माउंट एज वेल एज कोवाचिच। आई रिमेंबर दैट माउंट इज रेड नाउ। माउंट साफ निकला। अजिंक्य सेइंग Envy, yaar, nice to see you, yaar. आपको नींद आ रही थी, but still you're here. Again, big up. I know it's an emergency stream. Sometimes we need that. Why Chelsea fans are calling him Snake? He was ambitious and upgraded. भाई देखिए, Milan देखिए. मतलब I know, with all due respect, Manchester United is a better club in terms of the history, in terms of where they belong. Absolutely, ये नहीं बोलूँगा. लेकिन to say that upgraded, अभी भी jury is out. I don't see, यार, मैं खुद एरिक टेन हाग का फैन हूं, and I'm still saying that Manchester United as of now prediction ये है कि definitely they'll be above Chelsea next season में, maybe for the next few seasons it's a better project. लेकिन अभी तक Pochettino आया नहीं ना Chelsea में. We have not seen the kind of football that we are expecting. We have not finished the transfer window, so we don't know that yet. That is my debate. और देखिए, with all due respect again, भाई मैं गिराना नहीं चाहता भाई, प्लीज टेल मी गाइज। आई नो दैट कहीं ना कहीं एंटायर हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इन इंग्लैंड इज नॉट अबाउट जस्ट लास्ट 15-20 इयर्स, लेकिन लास्ट 25 इयर्स, 15-20 इयर्स भी, लास्ट 25 इयर्स में भी एक्चुअली काउंट द ट्रॉफीज एंड द लेवल ऑफ ट्रॉफीज दैट वी हैव वन वर्सेस द मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैन सिटी, वी आर एट पार इफ नॉट बेटर. That is a case that we should be discussing. Of course, Manchester United, you can still argue that they are the best club in England. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन आर्सेनल कहां से आ गई भाई कॉन्वर्सेशन में काई हावर्ट्ज के चक्कर में. बट कोई नहीं. यस, लेट्स गेट टू द लाइक्स गाइस. इफ एवरीवन कैन लाइक द स्ट्रीम सो दैट आई हैव एवरीवन्स ओपिनियन. आज मैं बहुत सारे कमेंट्स भी लेने वाला हूं एज ऑलवेज, आई ट्राई टू, बट इवन मोर सो. भाई श्रीनाथ तो बोल रहे हैं नन ऑफ देम आर स्नेक्स, बट देखिए श्रीनाथ, दैट्स द होल पॉइंट. एंड आई नो Declan Rice also, we discussed yesterday that he opted to kind of go with Arsenal rather than Man City or Bayern, who were both interested, and of course previously Chelsea were interested. I understand that part, लेकिन यहाँ पर there's no coincidence that the fact that we are having 3 people moving to competitors, and that's the whole point. Mount had a dream in Chelsea that he will join United one day. Arey bhai, come on. I think we overpaid for Mason Mount. Alistair, arey bhai, Alistair in the house, bro. Alistair is a very good friend. Alistair, what's up, bro? Big up. We have to talk. Long time no see, but big up to Alistair, yeah. And overpaid for Mount, I disagree big time, bro. Big time, I disagree. Not a generational talent as well. I disagree with both. The point I'm trying to make is, देखिए, Mason Mount kind of person who basically understands A to Z of English football, who someone who is very tenacious, जो बहुत बंदा है, जो assist भी लाता है, goals भी लाता है, leader भी है, ठीक है, like a Declan Rice is to Arsenal. Almost that leadership quality he has. In fact, people do not realize that. And the fact that he's good at free kicks. Okay. And English, of course. All this put together is a package that in a normal scenario, no one would give you. Bhai, Gallagher के लिए हम 50 million मांग रहे हैं. Gallagher is
नॉट टू बैड बट नॉट टू गुड इधर, ठीक है। तो गैलेगर के लिए हम 50 अपना कचरा भाई 50 मिलियन मार रहे, तो मेसन माउंट इन नॉर्मल सिनेरियो वुड बी डेफिनेटली 70 मिलियन। इट्स जस्ट दैट वन साल का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अ 60 मिलियन पाउंड्स। एंड यस, 60 million pounds for people who do not know yet is the final fee, which is the overall fee. I think it will be around 55 to 55 if I'm not wrong, but that's how it is. Mount इसलिए मैन यूनाइटेड आया क्योंकि 200k वेज ऑफर है, चेल्सी में 80k था, यूनाइटेड फैन, आई डोंट लाइक दैट मच सैलरी। भाई देखिए, इफ दैट इज व्हाई इज गोइंग, देन यूनाइटेड फैंस बिवेयर ब्रो। If that is why he's going, then beware. That's all. I would actually get the fact that if he's going for that plus winning trophies plus the fact that उसको guarantee मिला है to start and Pochettino ने guarantee नहीं दिया था, और मे बी चेल्सी ने गारंटी नहीं दिया बट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ wages are the big deal, then I think it's a red flag to be honest. लेकिन हाँ, I would not say, I'm not going to say that Declan Rice, Mason Mount, Kai Havertz, and why I'm including Declan Rice because he's a ex-common guy as well, कहीं ना कहीं सालों तक हमारे साथ लिंक था, and then you had obviously Kovacic. So all these guys are nowhere close to bad. They're all good players, mind you. They're all good players. Yes, मैं Kai Havertz के लिए भी बोल रहा हूँ. He's a good player. He's not been playing what he should for Chelsea, and he's not been played at the right position. He's not great, but again, we'll be discussing about where he could fit, and as well as Mount. I'm glad he left, so now we can build a team who want to play for us. लेकिन बचा कौन है? बचा कौन है? Who am I going to build a team around? Nkunku? Nkunku is a person you'll build a team around. Nkunku himself is not, for very first interview said that I want to play as a striker. That's what it seems like, but let's see. Guys, okay, nice to see you. All the players leaving the club and choosing the club they want to leave is up to them. Of course, it's up to them. No one's going to force them, Srinath. Hats off to Chelsea management for respecting it. Mount, Kova and Kai wanted to move similar to Peter, Luis, Mata. देखिए, नहीं, there's a difference. Srinath, there's a huge difference. There's a huge difference, my friend. देखिए, Mata, okay, I can get it. Peter Cech, David Luiz left almost when they were finished. They were nowhere close to the players they were in 2012, my bhai. मतलब they were nowhere close to it. So I'm not going to agree with this. यहाँ पर opposite, the tables have turned. The tables have turned. Simple as that. We got Cesc Fabregas when Arsenal had a buyback clause. Arsenal did not take it, right? We decided to take him. That was a thing that we had got him from the noses of Arsenal, an ex-Arsenal player. Ashley Cole, भाई हम गैलस को दिए. गैलस ने बोला था he was actually a fake snake as well. Gallus, who loved the club absolutely. Ghost goal, हमको सबको याद है, किसको मालूम था, दूर check out our last 20 years का series. Ghost goal, he was the guy, he was crying. I remember that night against Liverpool. बंदा ने बोला that no, I will score own goals. उसने blackmail किया. भाई, then we let him go and we got Ashley Cole in return. So basically the tables have turned. Simple as that, Srinath. There's a huge difference between a Mason Mount and Kai Havertz leaving at 24 and even a Kovacic leaving at 28, 29 versus a Peter Cech or a David Luiz or even a Willian. There's a huge difference, Srinath. Let's not even discuss that. Again, Mata, he was kind of forced out by Mourinho, and we all know that. Can't take over now. Mount, yaar, I'm really emotional. Bhaiya, after Hazard, I thought Mount might be our main guy. आज मैं सोच रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि Mount के around is what we need to build our team now. This is a classic chance for Mount to become a leader that he always wanted to become. But नहीं, अब वो सब फैन की बात है यार. भाई देखिए, सब लोग जो बोल रहे हैं ना स्नेक्स नहीं एक्सेट्रा, देखिए अगेन मैं फेक स्नेक बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट दे डिड बेसिकली व्हाट कोटवा डिड फॉर एग्जांपल, एंड रेस्पेक्ट टू कोटवा फॉर द प्लेयर ही इज राइट नाउ. बट कोटवा ने क्या किया था भाई, अपने को लटकाया था और लास्ट डे ऑफ ट्रांसफर विंडो में पतली गली से निकल गया. ठीक है, doesn't even care what the club that he is responsible for and what the club invested in him has deserved. No, he doesn't even care. वो किया था, इसलिए हमने बोला था snake, and that is a proper snake. I will not even lie. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है? Yes, the good part is they've not left at the last day of the transfer window. They left at almost the first day when Pochettino is arriving. In fact, the week before that. तो भाई that is a good thing. ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ मैं बोलता हूँ सब लोग को भाई, everyone, many people have worked in corporates, pretty sure. Anyone, मैं just to share with you all, and pretty sure आप लोग ने, कुछ लोग ने देखा भी होगा on my Facebook profile, which is in the description always. भाई basically I'm a software engineer and then moved to recruitment space as well as delivery management. मैं बोल रहा हूँ whatever happens in the field, right? I am telling you the best of the best, recruits are not let go to your competitors. I am telling you directly. Notice period issues होते हैं. I know that is debatable कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. That is not professional from the company's end. लेकिन होता है. क्यों होता है? Because you don't want to let go your best employees or your better employees to basically your direct competitors. And एक को जाने दिया, चलो आउट ऑफ रेस्पेक्ट ठीक है, दो को जाने दिया फिर भी ठीक है भाई, यहाँ तीन तीन भाई. साथ में मैं बोलना चाहूंगा, आर यू ट्राइंग टू टेल मी एवरीवन भाई कि
for example, N'Golo Kante, or maybe Edward Mendy, or a Hakim Ziyech, or a Koulibaly, or basically an Aubameyang as well. I know these are all names which are not ideal names, but do these, any of the names, do not improve any squads, be it in the top 5 leagues? I disagree. मैं बोलता हूँ basically, yes, पैसा मिला उनको ज्यादा when it comes to Saudi in terms of salary, but in terms of transfer fee, Chelsea would have got a better fee if they had gone to the rest of Europe. And I genuinely believe that. And that is what the difference is. These guys had a choice to make. ऐसा नहीं था कि Mason Mount में absolutely no one in the world was interested. Yes, I know interested होना एक चीज है, formal offer मिलना एक चीज है, but that formal offer happens only when you show interest back. That is the fact. तो भाई कहीं ना कहीं I have given them lot of benefit of doubt. I am not going to sit on the fence right now because मैं hope and pray कर रहा था because भाई ये जिताया था बंदों ने, ये पहली बार. Oh, bhai, this is someone who's held that Chelsea in the heart for 25 years. First time they won it. And they walked off to a rival. Seriously, guys. Anyway, Maddison is a better player than Mount, is what Aditya is saying. I don't think so. I don't think so. Overall, there are very, very aspects that Maddison is better than Mount. Absolutely. Maddison is better to the eye. लेकिन भाई हम सोशल मीडिया के जिंदगी में रह रहे हैं मेरे भाई. Mount, ask any manager in the world, he'll pick Mason Mount over Maddison. No two ways about it. By Pau Torres to Villa, good evening is cooking. Absolutely Predator Gaming. I think मैं पोल डाला था, मैं सोचा था मैं लाइव आऊंगा नेक्स्ट, विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफेंसेस का डोमिनो, लेकिन नहीं, यहाँ तो अलग ही न्यूज आ रहा है. यस, पाउ टॉरेस, बाय द वे विल बी टचिंग अपॉन ऑल द न्यूज. भाई सब लोग यहाँ पर जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग ऑन यार, इट्स एन इमरजेंसी स्ट्रीम. भाई देखिए, हम तो घंटा जानते हैं भाई, हम तो घंटा जानते हैं. मेरे मुंह पर क्या लिखा है? बेसिकली कचरा लिखा है. मैं खुद ही कचरा हूं ना. तो भाई आप लोग समझते हो, either ways give a like button, doesn't matter, just give a like button everyone. If everyone can hit the like button, whether you agree or disagree, ये एक चैनल है जहां पर आप disagree भी करते हो, तो I respect that. Come on guys, it's a fan channel for all to see. I want opposition fans to come on, I want Chelsea fans to come on, everyone needs to come on. I want to know every opinion, I want to discuss my views, hopefully with each and everyone, because you are my fam. So everyone, come on guys, let's hit that like button on the stream, let's hit that like button on the community post, because हमारी आवाज सुनाई नहीं देती यार, इसलिए मैं चिल्लाता हूं. समझे? समझदारों को इशारा काफी है. Ankit, after a long time, but a boy had a dream. He came to Theatre of Dreams to fulfill his dream. Harsh, don't like seeing it, but I can see. Bhai, again, imagine Mason Mount, Kai Havertz, or Kovacic, kissing their badges for the respective clubs. Just can't imagine the scene. Anyway, it is what it is. I can't wait for, again, exactly, Melon. The drama was unnecessary, but let's love the club and move on. Bhai, absolutely. This point, I agree 100% with Srinath. The club over anything and everyone. Simple as that. The club over anything. And I mean that for Manchester United, Arsenal, and Man City as well. Dekhiye, at some point, you will face those situations, your players. And again, being a fan for so many years, this is something which happens every time. But at one go, in one summer, I did not expect the entire midfield to go. The midfield which actually won us this and a lot more. Anyway, look at John Stones, what a player. I think next season he will do even better. Yeah, absolutely. Madison is good in tracking, Mount provides. हाँ, exactly. My point, अंकित भाई, मैंने last season का ending में बोला था, Mickey ain't staying here, he would leave us one day. Reece James clear. देखिए यहाँ पर competition करने नहीं बैठे हम. Reece James versus Mason Mount. Darren, I totally get your opinion, bro. Much love, and I totally understand your feelings यहाँ पर. I am not going to say even Reece James दूध का दिला है. कोई नहीं दूध का धुला है यार. देखिए, everyone, I love my players, but I love my club more. That is the thing which Srinath wanted to say, and I agree with him 100%. कि कहीं ना कहीं बेसिकली हमें अटैचमेंट विद द प्लेयर्स नहीं चाहिए. और मैं हमारे कम्युनिटी को भी बोल रहा हूँ यार, भाई उठ जाओ यार. रोनाल्डो और मेसी गोट्स है, एब्सोल्युटली गोट्स फॉर अ रीजन. ठीक है, उठ जाओ यार. इवन फेलो कंटेंट क्रिएटर्स, हो गया यार, पक गया यार. आप लोग बंद कर दो भाई. मेसी वो अभी भी जबरदस्ती का मेसी का न्यूज ला रहे हो, अभी भी जबरदस्ती रोनाल्डो का न्यूज ला रहे हो. हो जाओ, उठ जाओ यार. हमारी कम्युनिटी आर नॉट इतने बेवकूफ नहीं है, उनको समझना चाहिए फुटबॉल को. Let's celebrate the sport, let's celebrate the game, and rather than celebrate the players, the people. Attachment, I totally get it, but you're attached to your club more, you're attached to football more. So bhai, ek plea hai, if you guys agree, hit that like button. Every person who's watching the stream, you might think I'm a hater, but the fact is the goats will remain the goats. But bhai, community को मेरे से भाई रिक्वेस्ट है, उठ जाओ यार. हो गया आपके क्लिक बेट्स यार, हो गए. मैं पक गया हूं यार, हो गया आपके क्लिक बेट्स, हो गया. बंद कर दो यार. जबरदस्त अभी चले गए, मेसी चले गए अमेरिका भाई.
रोनाल्डो चलेगा सऊदी ब्रो, just stop it bro, just stop it. Okay, if you want to cover proper Saudi content or proper US content, do it, don't bloody fucking fake it. Okay, that's what I'm saying. Anyway, now if Chelsea don't get Caicedo, they are in trouble. Absolutely. And again, news are that we are ready to attack. And yes, that attack that I am giving to the community was some people are hating and dropping off. I don't fucking care, bro. I don't fucking care. ठीक है, I say it as it is. बाकी लोग में balls नहीं है. Then let me tell you honestly, they don't have the fucking balls. Okay, that's the honest truth. But Caicedo, we have to attack and attack quickly for sure. कहीं ना कहीं now I'm confident of getting Caicedo, and that's a good part in all this. रीस जेम्स भी चेल्सी लीव करता है फॉर मैड्रिड, लेट्स से पता नहीं यार, मतलब कम ऑन. देखिए, इट्स नॉट अबाउट calling a snake etc. भाई मेलन, let me tell you again, we were in our, by opposition fans will not relate. I totally get, आप लोग के साथ में बात करूंगा about how Mason Mount fits in Chelsea, how Kai Havertz fits in Arsenal, क्योंकि statements आए हैं by the respective coaches. But I will say that देखिए, when it comes to Mason Mount, when it comes to Kai Havertz, when it comes to Kovacic, when it comes to a lot of other players, especially these three, it is the lowest, and I mean the lowest point as a Chelsea fan in my life. And I've been a fan for a good while, bro. For people who do not me, I don't care. I've been. तो इतना लंबा में था lowest point. एक साल हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, पतली गली से निकल गया यार. और यहां पर गलती बोली की है, क्योंकि उसने 40,000 प्लेयर खरीद लिए, तो उसको बेचना पड़ा, क्योंकि जैसे एक फॉर्मल ऑफर आया, उनको पता है एफएफपी बैलेंस करना है, हमें 1 जुलाई पर दिखाना है नंबर्स. बिफोर दैट इफ यू गेट सम ऑफर ग्रेट, अदरवाइज वी विल ट्राई एंड वेट. दैट वाज द फॉर्मूला. और ये प्लेयर्स भी पतली गली से निकल गए, तो उनके मन में तो भाई दे आर हेल्पिंग द क्लब. घंटा ब्रो, घंटा. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस. भाई Aspilicueta is a far bigger legend, bro. Far bigger legend than this Kai Havertz and Mason Mount, bro. I'm not telling a snake, but I'm just saying far bigger legend. I know not everyone can become an Aspilicueta, not everyone can become a John Terry, not everyone can become a Francesco Totti, not everyone can become a Steven Gerrard. But that is something. Harry Kane को ले लो भाई, सब लोग. There is a point where you need to basically tell that, bro, एक साल नहीं है चैंपियंस लीग में, हमारे वजह से नहीं है. I will have the balls to sit down and sit with the team, be a leader and make sure my club comes back. If you really love the club, even at low wages, yes. Havertz ने बोला था, क्या बोला था भाई, जब तो थॉमस टुकल ने बोला भाई हम 7 सीटर में जाएंगे, याद है जब चेल्सी पर सैंक्शंस लगे थे, हैवर्ट्स ने क्या बोला था? Go back and see. Havertz and Reece James both said it. Go back and see what they said it. That's all I have to say. अंकित भाई, look at John Stones, ये देख लिया था भाई. John Stones के बारे में क्यों बोल रहे हो यार मेरे भाई? Let's stick to the topic. Why envy? Ankit bhaiya, now Man City and Liverpool are also interested in Gabri, Veiga. We are signing 2004 kids. Why Chelsea? Why? हाँ, ये star करके रखा. We'll be talking about how Chelsea will line up now. Talking about Madison talked about what Ankit said to him, which is interesting. Ankit bhaiya is a goat. Love your reaction. It's business now and we should move on. Yeah. देखिए, definitely there's a lot of saltiness, लेकिन at some point अच्छा है कि सागा और लंबा नहीं चला. That's for sure. क्योंकि जितना लंबा चलता उतना ही ज्यादा थोड़ा false hope रहता, you know, मेरे मन में. अमित भाई, ये क्या, what is IDGF? Mason Mount भाई, मैं अपना old school हो bro. Much love. Mason Mount wasn't even willing to speak to manager, was working for and let Felix go. Yeah, बिल्कुल यार, बिल्कुल 100%. AD in the house, क्या हाल है? Messi is good in the house. Chelsea got a hell of a deal for Mount for 60 million pounds. That's way too good. United overpaid, in my opinion, but that's football. Yeah, in terms of transfer market, overpaid, probably not. We got at par. Just to let you know, it was actually the market value of Mason Mount, very much so. It's definitely not overpaid, but I would agree that it's not underpaid either. It's definitely at par. But I would say in terms of potential of the player, in terms of age of the player, आप अगर नहीं देखो कितना बाकी उसका contract में that aspect निकाल दो और उसका form निकाल दो, which is definitely on, because hardly couple of players in entire 40,000 squad of Chelsea performed in the entire season for a reason. तो भाई वहां पर मैं बोलता हूँ Mason Mount जैसा player आपको मिल रहा है आज के scenario में, if you are in English football to an English club, to a rival, 60 million is peanuts. And let me be very honest there. Big up to you. But bhai, I think Mount didn't want to give one more year to the system. He might be seeing the project of a Chelsea. He's 24 years. Yeah, बिल्कुल. तो देखिए, it's not a coincidence that, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, subject line देखिए, title देखिए मेरे भाई. There is an issue. Poch or Boehly are also to blame. Did they basically convey the right project to these players? Probably not. Or they genuinely believe that these are not fit for the long run. उनकी mentality सही नहीं है. They have basically
peaked as a football player at a certain club by winning the Champions League, and they don't have more motivation to win the Premier League in the future. That's what I'm saying. It could be a bit of both. Whether you will come or not, but you will see a different Spurs under me, which quite stuck to me. Okay. Again, thanks Tiger Beast. Om, क्या हाल है भाई? Nice to you, Havertz amount गद्दारी. भाई देखिए, हाँ भाई, मैं कर देता हूँ यार. मतलब ये देखिए, यहाँ पर आई थिंक किसी ने टैग किया मेरे को ट्विटर पे, शाउट आउट उनको यार. एब्सोल्युटली, जनरली करता नहीं हो ये, बट आई नो पीपल माइट गिव मी हेट फॉर डूइंग दिस, बट आई थिंक इट्स टाइम ब्रो. देखिए यार, सीन इन फुटबॉल टू से दिस. कम ऑन, इतना तो आपको थोड़ा बेनिफिट और देना चाहिए. एंड आई नो कहीं ना कहीं भावनाओं में बहक जाता हूँ. क्यों नहीं बहकूंगा यार? फुटबॉल इज अबाउट इमोशन. फेक नहीं हो यहाँ पर. आई एम नॉट अ फेक स्नेक. आई एम नॉट अ फेक स्नेक ब्रो. I am not a fake snake. Let's have this, bro. Let's have this on screen. Let's have this on screen for some time. I think 60 million is fair deal. Yeah, exactly. I think it's at par, Pudin. Absolutely at par, considering उसका एक साल था, considering that basically उसका फॉर्म बहुत बुरा है और लास्ट सीजन इंजर्ड रहा है. एंड यस भाई, सब लोग क्या बात है भाई, सब लोग लाइक बटन दबा दो, ठीक है. आई नो कहीं ना कहीं मतलब हम पैसों की बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग चल रही है भाई, लाइक्स में बार्गेनिंग चलेगी. सब लोग जो हेटर्स है भाई, आप लोग भी लाइक बटन दबा दीजिए. आप डिसलाइक करो तो ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, कुछ तो करो. एक लाइक बटन है बस, ठीक है. लाइक डिसलाइक जो भी करना आपको कर लो भाई, ठीक है. सिंपल है सर. आपको अगर दिखती है मेरी मेहनत और मेरा पैशन, और if you see that I know something about football which I can discuss, if you feel like there's a brother or a friend in me that you can discuss something, be it an opposition fan or a Chelsea fan or a Milan fan, you're more than welcome. So bhai sab log, let's hit that like button. Definitely helps, as much as we might not be happy either ways right now. Ranaja Sen, bhai, again congratulations to you guys. Absolutely bhai, again big shout out to all the members here. I know main kam chat le raha hoga at times, but I'm trying to take as much as possible. But again, big up to the members. And again, I'm seeing a lot of members have not renewed directly in open terms. मैं पूछ रहा हूँ सब लोग, all the members have not renewed their membership. Yes, this is not something openly I would like to discuss, but I'm just saying that basically please give me feedback. आप directly मुझे मैसेज करिए, आप ग्रुप में मत बोलिए, आप मुझे मैसेज करिए क्यों आप रिन्यू नहीं कर रहे हो. Simple as that. If it's monetary, it's absolutely up to you guys, but otherwise you guys know it. If you want me to revisit the membership perks, I will do that absolutely. But I try and give you shout outs as much as possible, as well as डेफिनेटली आई एम ओपन टू कोलैब. भाई वी टॉक फुटबॉल कहाँ है भाई? आप लोग, आपको बहुत दिनों से मैं मैसेज किया हूँ. आई वांट टू कोलैब विद यू बिकॉज़ यू आर एन ऑलमाइटी गॉड, बट लेट मी नो. एनीवे, बिग अप टू एन स्पोर्ट्स टीवी एज वेल. बाय द वे, अभिषेक इन द हाउस, क्या हाल है भाई? एजेंट शॉ भैया, दे आर फ्रेंड्स. भाई एजेंट तो भाई हर जगह है. यहाँ तो चेल्सी में भी इंग्लिश प्लेयर्स, ऐसे तो बोल नहीं सकते ना. यू डोंट हैव प्लेयर्स हु don't want to give their soul for the club. नहीं बिल्कुल. So that's a, देखिए, it is a positive thing which comes out of this, but does that mean that Chelsea have to start from scratch? Absolutely yes. Enzo Fernandez in midfield only. भाई देख लेते थोड़ा बहुत. चलो हम पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखेंगे कि पहले चेल्सी का देखेंगे? व्हाट डू यू थिंक इन लाइनअप्स? डू लेट मी नो चैट. थोड़ा सा मैं बिग अप टू वना बज, संजीव, सब लोग मैं देख रहा हूँ भाई, गौरव भाई, सब लोग ex members as well as members bro. Big up to you guys bro, everyone. Don't get me wrong, I'm not talking about the player potential, but Chelsea respecting the wishes. We just need to pull a plug into the toxicity. Let's build around Enzo, RJ and Nkunku. Yeah, देखिए, I respect, my club is different and we have always done that with Srinath, and that's a great point, that we respect the contribution of players who've been there. भाई लेकिन Srinath, let's get it right. 3-4-5 साल is not that level of dedication that they've given to a club. कोई भी अगर major player move होता है to a major club or is promoted to the senior team, would expect to play for 3, 4 or 5 years. So I think yes, they won the Champions League, yes, they won the Club World Cup, yes, they won a lot of things, but whatever it is, they also failed a lot of times. They are equally responsible. What I'm trying to say is here, it's not necessary that Chelsea always respects each and every one. You have to make it a little bit subjective. You cannot make it objective. भाई respecting an N'Golo Kante is different from respecting a Kai Havertz. Kai Havertz ने बहुत किया है क्लब के लिए, लेकिन 3 साल दिया है बस क्लब के लिए. मेसन माउंट बहुत किया है, 4 साल दिया है. कोवाचिच 5 साल दिया है. Respecting Azpilicueta is totally different than respecting Kai Havertz. Just saying. Enzo Fernandez अकेला was fighting with the Manchester United players. Yeah, बिल्कुल. Okay, Kovac is the biggest imposter. He was the core in the midfield after Kante leaves, and he should have taken responsibility. No, I would say after Jorginho, it was clear that Kovacic will be that main man, but नहीं. And भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना? मैं बोलता हूँ, कोट है यार, कोट, and I have a quote. Kovacic 2 महीने पहले बोला था that नहीं, it's a number 8 jersey I'm wearing. I need to continue the legacy of Frank Lampard. He said it.
He said it, bro. Havertz ने मेरे मुंह पर बोला है, आंख में आंख देकर डालकर. I'm telling you, I know fan को क्या बोलेगा वही बोलेगा, right? But the way I asked was different. That's why they edited it, bro. I'm telling you guys, ठीक है, it's different. Or you know the guys, the way I speak, मैं directly मुंह पर पूछता हूँ, bro, even if it's the best of the best, and I was lucky enough to be there, absolutely. I'm telling you, and Mason Mount तो भाई जितना कम बोले उतना better है. Mount is better than McAllister. देखिए यहाँ पर comparable. I know again people might laugh, people might see. I agree with this comment. Yes, in terms of creativity, in terms of movement, McAllister is better. But in terms of the overall player right now in the Premier League, Mount is more proven than McAllister. It's at least at par. I'm not saying better बहुत ज्यादा है और बहुत worse है. I'm saying it's comparable at par at least. McAllister, Mount, कहीं ना कहीं हम as football fans हमें सिर्फ याद आता है लास्ट 7-8-10 महीने बस. अच्छा, चलो बाबा ट्वीट नहीं देखा यार, क्या है पहला देखते. अगेन जस्ट होपिंग दैट इट्स नॉट समथिंग. यार आप डायरेक्टली यहाँ डाल दिया करो ना, मैं ट्विटर पे जाता हूँ, देन आई एम सीइंग माय गाइस. मच लव फॉर गौरव फॉर पुटिंग इट एटलीस्ट, बट आप डायरेक्टली डाल दिया करो मेरे भाई. इट सर्टनली हेल्प्स बिकॉज अभी बीच स्ट्रीम में आई हैव टू गो एंड लेट्स सी माय बॉय विद अ हार्ट ब्रेक एंड विद टीयर्स कमिंग. पहला कमेंट मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको कौन सा दिख रहा है पहला कमेंट? ओके, बहुत अच्छा, कोई नहीं. आई एम सीइंग द कमेंट्स. बेसिकली माय बॉय with a sad smiley with a tear in the eye and of course the heartbreak, but कोई नहीं. Thanks for the super chat, bro. Again, sorry for taking late. This is for the passion of Ankit. Like and keep the blue flag flying. नहीं देखिए, passion is absolutely great, Srinath. And my complaint is that, and by the way, much love to you. I know that you have the passion as well, my bro. लेकिन and again, thanks for super chat. But I would say that this passion, मतलब ये एक झूठा पैशन है. मतलब the guy, the players, the times have changed. मतलब I couldn't have imagined someone like a David Luiz. हम लोग बहुत hate लेते हैं. I know that he went to PSG and at that point it's clear that Jose Mourinho के plans में नहीं है. But हम उसको hate देते हैं. He came back and won the Premier League, bro. I'm just saying it. And I know he went to Arsenal, but at what point of his career? There's a huge difference. आप गए थे PSG, there's a difference to go to PSG versus to go to Manchester United, Arsenal and Man City. That's all I'm saying. And again, Chelsea respect करना चाहिए for a lot of people or players who have given a lot for the club, but don't do it for each and every one. There is a filter जो आपको डालना पड़ेगा. Anyway, by the way, I really want that 200 million bought from the sales to be heavily invested in midfield and a proper striker, maybe a striker in winter window, because I'm not sure of anyone right now. I can't say anything about players, but management क्या कर रही है? Why selling players to your direct opponents? Selling other league clubs is okay, but now Chelsea को business club बना दिया है. बिल्कुल. And मैं बोलना नहीं चाह रहा भाई. I know Spurs भी नहीं बेचती है यार. Spurs भी नहीं बेचती है to anyone in the league, generally speaking. And that is the thing. Spurs, yes, they've not won anything, and I know that Spurs have a bad reputation when it comes to not selling the players. I totally get that. लेकिन आपको एक बीच मिडिल ग्राउंड फाइंड करना है. You cannot be ideal as a club. You just cannot be. और let's be real. As much as we are respecting the players, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पैसे मिले भाई, हमें पैसे मिले हैं. और कब मिले? 1 जुलाई से पहले मिल रहे. That's the whole point. Ankit bhai, the high price tags the Premier League put on the players, only Premier League teams will be able to afford the players. Hence, if you don't want to sell up players to rivals, then you have to reduce the price. No, I think Messi is good. I totally get that point. And इसलिए मैं बोल रहा हूँ, not each and every club is able to afford. लेकिन for instance, Bayern Munich has afforded players, bro. By Delict, we lost Delict to Bayern Munich last season. ऐसा नहीं कि they cannot afford, they can afford. And again, Liverpool, so Slobozlai को Liverpool चल रहा है. ऐसे तो Liverpool fan बोलता है भाई हमें पास घंटा पैसा है. ठीक है, Liverpool fans, where are you guys in the chat? ऐसे तो बोलता है घंटा पैसा है और सच्चाई है. अरे Liverpool don't buy players just outright. ठीक है, लेकिन सोबोस्लाई का आते ही भाई लिवरपूल का जेन्युइन इंटरेस्ट आ गया. क्यों? क्योंकि बंदा का बेसिकली जो रिलीज क्लॉज है वो आज या कल रात को एंड होने वाला है 70 मिलियन का. एंड दैट मींस लिवरपूल कैन नेगोशिएट. मैकएलिस्टर उनको मिल गया चिल्लर में, उनको मिल जाएगा सोबोस्लाई में चिल्लर में. और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, सोबोस्लाई टू लिवरपूल भाई, मैं बोल रहा हूं हियर वी गो. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, सोबोस्लाई टू लिवरपूल, हियर वी गो. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, mark my words. I haven't followed Chelsea news in a while. Who are they seriously targeting for the goalkeeper and striker? उस पर भी आ रहे हैं. Absolutely. By Christopher Nkunku in the house. Thanks, bro. Don't worry, Ankit, bro. I am there. Christopher Nkunku, thanks, bro. I know that kahin na kahin we have to build around you, but a new player into a new league, it's very dangerous. It's very dangerous to do that. It's very dangerous, let me tell you.
राहुल बोल रहा है, I respect your emotions, but nowadays players look after themselves over loyalty for the club. As for we needed money for FFP reasons, and no other clubs in Europe will no other club तो नहीं है, लेकिन बहुत कम clubs. I understand your point, Rahul. I still believe अगर Mason Mount or Declan Rice would have shown the interest back at Bayern Munich, I'm pretty sure one of the two, or even Havertz, one of the three might have gone there. I genuinely believe three different players, but I genuinely believe one of the three might have gone. हाथ जोड़ के आपके सामने एक बारसा फैन आपसे अनुरोध कर रहा है कि प्लीज कैसी ले जाइए चेल्सी वाले. पॉच इज अ फैन ऑफ कैसी एंड ही विल कम टू चेल्सी फॉर अ कट प्राइस. अब तो शायद रियलिस्टिकली लेना पड़ेगा यार. आई एम जस्ट हैप्पी वी डिड द साइनिंग एंड डिडंट. अगेन कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर एंड फैंस. टेलिंग यू गाइस that this guy will definitely be a good player. I'm telling you guys, again, he might not, blow the world away. I know Manchester United fans काफी excited नहीं है as much as you would have been, say for example last season Anthony even. लेकिन I'm telling you guys, this guy will give more for the badge than Anthony, and I know it pains me to say it. That's actual fact, an actual fact. I believe that. Thanks Jaren, absolutely. And yes, let's everyone like the stream. By the way, मैंने बोलना भूल गया, चेल्सी फिनिश्ड. रकीब खान, आप बोल रहे हो इतने दिनों से और करीब आ रहा है, आपको तो लग रहा होगा नहीं हम वापस से शुरू कर रहे हैं. लेकिन ईद मुबारक यार सब लोग. आई नो इट्स नॉट अ गुड point for me as a fan of a football club, but generally Eid Mubarak definitely सबको यार. Again, my apologies for not saying that earlier. I don't know who feels worse, you or me. देखिए Nathan in the house, and Nathan भाई is a Manchester United ultra. If a Manchester United ultra is like feeling that way, and this guy being a Chelsea fan is feeling this way, bhai, who's to blame? Certainly there is some problem. There is some problem in the way that if Mason Mount does not fit Manchester United exactly what a Manchester United fan ultra would want, then why is he going there? It's an easier option, simple as that. But again, he will give it your all. That is for sure. Where is Chelsea Academy going? Is the team being academy to grow for players and leave for some? भाई देखिए, मैं देख रहा था कमेंट्स आज कि we have signed another, I think on Angelo Santos. भाई हमने Santos ट्राई एक बंदे को साइन किया है, एंजेलो गैब्रियल, सॉरी, फ्रॉम Santos. तो भाई we have signed another 18-year-old, and we have signed totally about 9 to 11 players, I believe, including all the youngsters, including January window वाले youngsters भी जो हमने साइन किया था. भाई इनका क्या करोगे? आप अचार डालोगे कि सबको तो खिला नहीं सकते हो, सबको लीडरशिप क्वालिटीज आप नहीं दे सकते हो सब में. एंड एट द सम पॉइंट यू कैन नॉट से, यहां पर ट्विटर मीडिया बोल रही है भाई 15 साल के लिए चेल्सी आर सेटल ब्रो, वी आर सेटल. घंटा सेटल ब्रो. हम मेसन माउंट और काई हावर्ट्स के लिए भी बोले थे 3-4 साल पहले. मुझे मालूम है काई हावर्ट्स का जब अनाउंसमेंट होता, मैं लिटरली हर एक सेकंड को ट्विटर रिफ्रेश कर रहा था, हर एक सेकंड को. आई वाज नॉट इन दिस सिटी ब्रो. आई रिमेंबर दैट नाइट, दैट फुल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. शाम को हुआ था, इट वाज मॉर्निंग टाइम इंडिया टाइम भाई, आई एम टेलिंग यू, और लेट टाइम था कनाडा टाइम. आई एम टेलिंग यू उस समय वहां था मैं. और आई रिमेंबर हाउ द अनाउंसमेंट केम अबाउट, एंड वी ऑल सेड दैट. जो यहाँ पर कमेंट है ना राहुल से, दैट्स आई एग्री विद दैट. दीस डेज प्लेयर्स आर नॉट थिंकिंग दैट वे, दैट हाउ फैंस थिंक. आफ्टर दिस माउंट साका, माय रिस्पेक्ट फॉर डियोंग. और भाई एब्सोल्युटली देखिए, समटाइम्स यू डोंट नीड टू बी अ लोकलाइट, you don't need to be that guy. Frankie de Jong is a Dutch player who understands the legacy of Dutch players at Barcelona. This idiot and these sets of idiots do not understand the legacy. एंड स्पेशली कोवाचिच में बोलूंगा, चलो मेसन माउंट भी बोलूंगा, लेकिन कंपेयर टू काई हावर्ट्स, आई वुड से कोवाचिच एंड मेसन माउंट आई वुड ब्लेम मोर. कोवाचिच इज समवन हु लिटरली वन चैंपियंस लीग फॉर फन. उसने देखा है लेगेसी एट रियल मैड्रिड, उसने देखा है लेगेसी एट इंटर मिलान, उसने देखा है लेगेसी एट चेल्सी. ही वाज सपोज्ड टू बी द बॉल बेयरर और फ्लैग बेयरर, व्हाटएवर यू से. भाई आफ्टर जॉर्जिनियो व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू, लाइक अ फ्रैंक लैम्पार्ड, इवन मेसन माउंट. भाई नहीं, उन्होंने नहीं देखा. अगेन, आप बात किए हो कोई और क्लब से, आप पतली गली से जल्दी में क्यों निकल गए? आपने हेल्प किया चेल्सी को, घंटा हेल्प किया चेल्सी को. बस यस, डेफिनेटली लेट्स लाइक द स्ट्रीम एवरीवन. थैंक्स डेरियन फॉर सेइंग दैट. मिस रामिरेज सो मच. वो बंदा, या अगेन देखा यार, मैं गौरव देखा. टॉप फुटबॉल एज इन द हाउस, माउंट गॉन. अरे भाई क्या हाल है भाई? जी भाई इन द हाउस. भाई जी भाई अगेन ईद मुबारक. आई जस्ट मैसेज हिम कपल ऑफ आवर्स बैक. भाई जी भाई आपको मैसेज किया, फिर ये न्यूज़ आया. आई एम लाइक टोटली पिस्ड ऑफ ब्रो. आई हैव लाइक टोटली लॉस्ट इट. आई हैव टोटली लॉस्ट इट. बट अगेन बिग अप टू जी भाई यार. आई होप यू आर वेल. विल टॉक सून यार, विल टॉक सून फॉर श्योर. भाई थैंक्स मैन विष्णु, अगेन थैंक्स अ लॉट. बारसा फ्ली मार्केट दैट्स द ओनली वे टू सील आवर डाउन डेड वुड्स. मुझे क्या, हम तो रेलीगेट हो रहे हैं विद आवर टीम डिफेंस. ओके टॉड बॉली कुछ भी कर, बट do not let Aspi go to Inter. Use him in a swap or do something free में. Inter जाना मत. देखिए
देना पड़ेगा भाई, आई थिंक एसपी को देना पड़ेगा। आई नो इट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन, लेकिन आई नो कहीं ना कहीं वो एक राइवलरी बन गई है बिकॉज ऑफ लुकाकू सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द कपल ऑफ ट्रांसफर्स दैट दे हैव हैड व्हिच आर नॉट सक्सेसफुल बिटवीन इंटर एंड चेल्सी। लेकिन साथ में भाई हमें शायद देना पड़े, वहां पे मैं फिर भी समझता हूँ थोड़ा बहुत दैट रेस्पेक्ट एसपी एंड ऑल, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरीवन। पेड्री नहीं दूंगा, जी भाई बोल रहे मुझे दे दो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भाई। प्रणव इन द हाउस, प्रणव बोल रहा हाउ गुड विल द कैसेडो एंड एंजो पार्टनरशिप। भाई देखिए मैं इतना देर से बात ही कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं यहाँ 11 बनाने वाला हूँ भाई, बेस्ड ऑन द ट्रांसफर न्यूज। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर सोबोसलाई मेरे ख्याल से लिवरपूल जा रहा है, और मुझे पता है दे आर लिटरली वेटिंग फॉर द रिलीज क्लॉज टू गेट ओवर। प्रोजेक्ट सेल करेगी लिवरपूल, उनका हिस्ट्री सेल करेगी लिवरपूल, एंड दैट इज व्हाट दे विल डू with basically a McAllister already there. It is quite possible, but this on the screen, you know, for what it is for. But again, Pranay, काइसेडो पार्टनरशिप और एंजो पार्टनरशिप, काइसेडो और एंजो पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा अगर बेसिकली वी हैव अ थर्ड मिडफील्डर हु हैज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री। अब इंकुंकू के पास है इंडस्ट्री, बट विल वी प्ले हिम एज अ कैम, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अब वो टाइम विल टेल। लेट्स सी और क्या बोल रहे हैं भाई, एक सेकंड मैं थोड़ा सा स्किप करो कमेंट्स। भाई मुदित इन द हाउस, थैंक्स मैन, थैंक्स अ लॉट फॉर द सुपर चैट भाई, ऑलवेज द मेंबर्स सपोर्टिंग द चैनल मैन, बिग बिग अप। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पर, लेट्स सी बाय द वे न्यूज़ है भाई अपने मुदित के लिए भाई, ऑफ कोर्स ऑल द बायर्न फैंस इन द हाउस, किम मिन जाए इज गोइंग, ग्रेट न्यूज़, बट एट द सेम टाइम लूकास हर्नांडेज लीविंग। अब वो लेफ्ट फुटेड डिफेंडर है, कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ लॉस। पुदिन सॉरी मुदित, all the guys of Bundesliga fans, do let me know who do you think is better। मतलब मैंने पोल भी डाला है, but I genuinely believe that Lucas Hernandez is injury prone, yes, but the fact is Lucas Hernandez gives you a dynamic capability in defense। I would say Lucas Hernandez going to PSG is actually a loss। Kim Min-jae is a great defender, बहुत अच्छा किया absolutely Napoli, लेकिन हम as football fans ना हम भूल जाते हैं फुटबॉल इज मोर देन जस्ट 1 year। इट इज इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली, द रीसेंट ईयर द फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन coming from one league to then Italian league and now Italian league to Bayern Munich again fitting in is not a cakewalk। और वो थॉमस टुकल हैज अ जॉब ऑन हिज हैंड इन माय ओपिनियन, बट अगेन कंग्रेचुलेशंस। ओके एंडी का टू रोमा ऑलरेडी हो चुका है ब्रो, ओके ओके कोई नहीं कोई नहीं। अनिमेश क्या बोल रहे हैं, ओके ऑलरेडी चेल्सी को ब्राइटन बना दिया। भाई देखिए वी हैव बिकम ब्राइटन, वी हैव बिकम नॉट इवन स्पर्स भी नहीं बोलूंगा, स्पर्स तो जानने नहीं देते ना ऑपोजिशन क्लब्स को, एंड वी हैव बिकम लाइप्जिग ब्रो। एट द एंड ऑफ द डे मानव बोल रहे इफ यू गेट गैब्री वेगा you would be more than happy to see him replace Mount। He has shown signs when he settles he would explode and I hope we land him though। मानव मानव बिग बिग ब्रो, मच लव मानव भाई, अच्छे से चिकनी चुपड़ी बातें करके लास्ट में छुरा बोल दिया है। I hope we land him though, and that is a Man City fan talking obviously, but हाँ let's be real मानव, I know कहीं ना कहीं Gabri Veiga to Man City means that he may not start every game, and Gabri Veiga to Chelsea means he has a better probability of starting every game, but we also know bhai Gabri Veiga coming from the Spanish league going to Man City going under Pep Guardiola is going to happen, let's be real about it, ठीक है। और बैकअप ही विल इवन गो टू लिवरपूल क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड है, फिर चेल्सी, दैट इज गैब्री वेगास प्रायोरिटी क्योंकि रिलीज क्लॉज है, बट वो रिलीज क्लॉज अगर तीनों ही मीट करते हैं भाई यू नेवर नो, इट्स प्लेयर्स चॉइस राइट। सो प्लेयर हैज टू चूज इन माय ओपिनियन एज मच एज आई वुड लाइक हिम, बट देखते हैं अब देखते हैं क्या फिट होगा। भाई मैं बहुत देर हो गया, आई वुड लाइक टू मेक अ 11। आई नो बहुत कम प्लेयर्स बाकी चेल्सी में, भाई हमने एक तो 11 बनाएंगे हम, कौन से प्लेयर्स छोड़े चेल्सी, ठीक है। हमने प्लेयर लेफ्ट चेल्सी ब्रो, everyone in the chat, और you know that they are definitely going to leave 100%। तो उसमें कर देते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मेशन क्या बना है, 4-2-3-1, चलो 4-2-3-1 करते हैं इसमें, और वी कैन डू अ दिस ऑल्सो, एक सेकंड ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैम किसको डालेंगे, माउंट, मेसन माउंट, और यहाँ पर जीएश ऑलमोस्ट डन यार, लेट्स बी रियल, वो ऑफिशियल हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। पुलिसिक आई नो इज इन टॉक्स विद एसी मिलान बट आई एम प्रीटी श्योर इज गोइंग, इफ नॉट पुलिसिक इसको डालेंगे बट आई डोंट नो, बट यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑब्वियसली हैवर्ट्स, और बिकॉज ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर एट चेल्सी। यहाँ पर किसको डालना है हमने, कोवाचिच, कांटे, these are actually players who left Chelsea by the way, or leaving, about to leave Chelsea, left back by the way स्ट्रॉसबर्ग जा रहा है भाई अपना मलंग सार, अपना दो बी क्लब है, तो मलंग सार गोइंग देयर, तो मलंग सार को डाल देते हैं, मलंग सार है।
कुलीबाली, ठीक है। और कौन है, हुम आई मिसिंग गाइस, इतने सारे बंदे छोड़े ना कि मैं भूल ही गया नाम। एवरीवन इन द हाउस, मेंडी। और कौन छोड़ा, लेट मी सी द कमेंट्स। हाँ, नेक्स्ट 11 ही करेंगे भाई अभी। जी भाई, नेक्स्ट वही बना रहा हूँ। इफ Nkunku doesn't want to play as a cam, why don't you go for Felix again either? भाई बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है यार, बहुत एक्सपेंसिव है, दैट्स द थिंग। देखिए, हमने इतना स्पेंड करना था तब तो हम सोबोसलाई को अकेले जाते ना इन टर्म्स ऑफ द रिलीज क्लॉज, क्योंकि हमें पता है कि विद सोबोसलाई देयर विल बी अदर क्लब्स इंटरेस्टेड लाइक अ न्यूकासल, लाइक अ लिवरपूल। फिर भी वी डिड नॉट गो फॉर इट। हाँ, अभी भी 24 आवर्स बाकी है फॉर अस टू बेसिकली हिट दैट रिलीज क्लॉज, लेकिन seems like we are not going for it for whatever reason. We are more interested in outgoings up until 1st of July. और फिर काइसेडो डील अपने को करना है एब्सोल्युटली। एस्पिलिक्वेटा, यस, एस्पिलिक्वेटा ऑफ कोर्स हैज लेफ्ट, राइट। एस्पिलिक्वेटा को कर देते हैं यहाँ पर। एंड देन यू हैव लॉफ्टस चीक। हाँ, लॉफ्टस चीक भी तो यार मिलान गया, लॉफ्टस चीक को कहाँ फिट करे। थ्री, लेट्स मेक इट अ 3-3-4-3 कर देते हैं, चलो ठीक है। कहीं ना कहीं भाई, ये देखिए मिलान, बाय द वे विश हिम लक यार। अब देखिए लॉफ्टस चीक का डेडिकेशन देखिए, आई वुड से ही इज अ मच, आई वुड रेस्पेक्ट हिम मोर देन मेसन माउंट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सॉल्टी बट डेफिनेटली यार, थैंक्स ब्रो, एब्सोल्युटली। भाई जी भाई फ्री हो क्या, लेट मी नो ब्रो, आप आ जाओ यार, फ्री हो तो डेफिनेटली मस्ट लव। लेकिन मैसेज करिए इफ इन केस यूर फ्री। चालो बा अभी तक जा रहे नहीं है अनिमेश, आई डोंट थिंक इज गोइंग। भाई दिस इज एन एक्चुअली 11 प्लेयर्स हु आर लीविंग चेल्सी। तो मिशन अकम्प्लिश्ड। वहां पर टॉड बोली इनको अच्छे किए, बट रिमेंबर वी मेड अ मिस्टेक, कहीं ना कहीं हमने फिक्स किया है अपना जो मिस्टेक था, एंड दैट इज व्हाई वी आर लेटिंग गो पीपल क्वाइट इजीली। पुलिसिक आई थिंक विल बी डन, आई थिंक ही इज नॉट हैप्पी एट चेल्सी एट ऑल, वो क्वाइट क्लियर है। भाई कल मैंने वीडियो किया था मिलान चैनल पर, आप लोग ने देखा होगा, मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था। भाई वहां के मिलान फैंस, उनको एक तो पता ही नहीं, घंटा साला मैं भी एक मिलान फैन हूँ, ठीक है, मेरे से लड़ पड़े। भाई पुलिसिक टूकल खाली राइट विंग बैक खिलाता था भाई साहब, पुलिसिक को राइट विंग बैक भी खिलाता था, पुलिसिक को राइट विंग बैक खिलाता था जब प्लेयर्स वर इंजर्ड और देयर वाज नो वन अवेलेबल। But if everyone is available and Pulisic got a chance, he got as a chance, but as a substitute and as a right winger or right attacking midfielder in this formation. Guys, I know my stuff, bro. Just saying. If you're watching, in case आपने गलती से सब्सक्राइब कर दिया है, but much love to the Milan fan here whose channel I went to. But anyway, भाई तो ये है अपना 11 जो छोड़ गया। अब देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल यार जी भाई, आपको मैं भेजता हूँ लिंक। लेकिन अब हम बनाते हैं द 11 विच इज गोइंग टू बी प्लेइंग, और आर देयर ऑल ऑफ सडन 40,000 प्लेयर्स से। भाई पोचेटिनो का सिस्टम है 4-2-3-1, आई थिंक नैरो इज व्हाट ही विल स्टार्ट विद, आई जेन्युइनली बिलीव। उसमें बेसिकली क्या खेलेगा, अगेन विल कम टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड बिट ऑफ इट एज वेल इन टर्म्स ऑफ ईटीएच प्लान। लेकिन लेट मी सी आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ यही होगा मेरे ख्याल से। तो कौन खेलेगा भाई यहाँ पर, कौन सा, क्या मैं फॉर्मेशन क्या डाल दिया, करेक्ट है क्या? आई थिंक दिस हाउ विल प्ले, आई प्रॉब्ली श्योर विल प्ले दिस वे। तो लुक्स लाइक इट, एंकुंकू यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पर स्टर्लिंग एज मच एज वी डोंट लाइक इट टू बिगिन विद वही रहेगा, एंड इवेंचुअली आई थिंक मडवेके और मुड्रिक विल टेक द विंग्स, एंकुंकू माइट प्ले अ कैप, प्रॉपर 4-2-3-1 हो जाएगा। लेकिन स्ट्राइकर अभी के लिए जैक्सन है। Vlahovic, just to let you all know, भाई न्यूकासल भी इंटरेस्टेड है। He might just go Newcastle. There might be a possibility as much as Vlahovic थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा था मुझे। Of course, यहाँ पर I'm assuming Caicedo is coming for 80 million pounds. Looks like it. I would say not overpaying, not underpaying. It's totally fine in my opinion considering जो किया है। Enzo Fernandez and we have unfortunately Chilwell, who I'm saying unfortunately because he lost his dad. Yeah, really sad for that. But Reece James will start. Malo Gusto is a बैकअप। यू हैव भाई ब्रेकिंग न्यूज, फोफाना जिसको हमने थोड़ा बहुत हेट दिया था आफ्टर द विनिशियस मोमेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द लीग, भाई ही हैड बीन ऑफर्ड टू बायर्न म्यूनिख, लेकिन बायर्न म्यूनिख इंटरेस्टेड नहीं थी, वो इंटरेस्टेड थी किम मिन जाए पर। बट आई थिंक नाउ दैट फोफाना इज देयर, ही इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी देयर, बट नाउ वो न्यूज बता रहा है ही माइट नॉट स्टार्ट इन पोचेटिनोस प्लान्स, और आई थिंक वी माइट गो विद द 39 ईयर ओल्ड टू स्टार्ट। बारिशेल एज मच एज लेवाई कॉलेज को हम चाहते रहेंगे, और गोलकीपर is going to be Kepa as much as we want Onana, he's going to Manchester United। भाई सब लोग मिडफील्ड में कौन आएगा अब बोलिए, who is going to be coming to midfield? Let me know, एक सेकंड मैं जी भाई को लिंक भेज देता हूँ, let me see if you can join। Okay, let me see, I'm just sending the link to him। चलो
4-2-3-1, Kepa, Badiashile, Thiago, James, Enzo, Caicedo, Nkunku, Mudryk, Madueke, Jackson. ओके, तो बेसिकली आप बोल रहे हैं एंजो काइसेडो विल बी अ डबल पिवट. आई थिंक देयर हैज टू बी अ थर्ड मिडफील्डर हु डज अ लॉट ऑफ टेनिशियस वर्क यार. कचरा, हाँ वही लग रहा है अभी. कुडूस नहीं यार, एज मच एज मैं चाहता था कुडूस को, मुझे नहीं लगता हम ब्राइटन के अगेंस्ट जाएंगे. ब्राइटन आर गोइंग फॉर हिम. मैंने 2-3 बार देखा है दैट फेब्रिशियस एक्चुअली करेक्टेड दैट. अरे बिप्रा नहीं यार, कोई इग्नोर मोड पे नहीं यार. बिग अप यार अगेन. मैंने कल बहुत ही सॉल्टी मोड में किया था स्ट्रीम, अभी भी हूँ सॉल्टी यार बिप्रा, बट कोई नहीं. नथिंग, आर्सेनल की कोई गलती नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. अमराबाद प्रेफर्स ला लीगा प्रेफरेबली तो एटलेटिको या, दैट्स व्हाट इट इज पुट इन एब्सोल्युटली. लेकिन इससे बेटर तो एस्टन विला टीम लग रही. इट्स अ रियल थिंग ब्रो. भाई अभी एज थिंग्स स्टैंड दिस इज व्हाट इट इज. मतलब we really think that this team is good enough to get top 4. Honest to God बोलिए, honest to God बोलिए. मतलब it looks good certain parts, लेकिन it's not nowhere close to basically how a Liverpool team will look like. Liverpool team कैसे लगेगी भाई? Imagine आपके मैक एलिस्टर एंड सोबोसलाई going to Liverpool. Just imagine that. Imagine a Gabri Veiga going to City and already Kovacic चल गया and looks like Guardiola is going. तो आप कंपेयर कर सकते हो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? एक सेकेंड, हाँ. तो देखते हैं एनकुंकू बिहाइंड जैक्सन एंड मडवेके ऑन द राइट. हाँ, मतलब दिस विल इवेंचुअली हैपन अंकित, बट आई डोंट थिंक इट स्टार्ट विद दैट, कंसीडरिंग दैट. हाँ, आई थिंक इट स्टार्ट विद बेसिकली हैविंग श्योरिटी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट ही वुड डू, बट लेट्स सी. By Madison could have been an option, but I think the fact is looks like the players Gabri Veiga हो गए या Soboslai हो गए. Basically these are the kind of players and even some other DMs जैसे रोमियो लाविया हो गए. Not a particular DM, but हाँ बहुत सारे young players के लिए जा रहे हैं हम, और rather interested in them. लेकिन साथ साथ में these are those players who are not number 10s. Madison is more a number 10 than a number 6 or number 8. We are more interested in getting a second number 6 or a number 8. That's what it looks like. If Brighton is going for Kudus, then Chelsea will not go after him just to maintain the good relationship between the clubs. हाँ, वो तो दिखा दिया हमने कुकुरिया के लिए देकर यार पैसे. Tottenham looks better than Chelsea lineup now. Wow. Obviously Jackson is not a starter. अभी के लिए he looks like it, Ajinkya. But हो सकता है that we might go big on a striker. Could be Vlahovic. I don't see Osimhen or Lautaro are really coming. That's my particular opinion. Madison मिस नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा मैडिसन को स्पर्स एकदम चीप में खरीद रहे, एकदम चीप में खरीद रहे. Honestly, we will finish 6th or 7th to be honest with this team. देखिए अभी और यंगस्टर्स को खरीदे यार. We are planning for the future but not for the current. कचरा और जैक्सन को अगर रिप्लेस कर सके तो चांस है. चलो ठीक है. टॉप 4 इज वेरी टफ, संजीव बोल रहे हैं. वैसे गैलेगर की नेचुरल पोजीशन में देखना का मौका मिलेगा. नहीं, दैट्स अ गुड पॉइंट. जी भाई इज एब्सोल्युटली राइट. Gallagher is someone who is not a number 6. He is someone like who's having a lot of industry. हाँ, क्वालिटी में इश्यूज है डेफिनेटली, मैं बोलता हूँ, लेकिन ही इज द थर्ड मिडफील्डर. जैसे मैं बोलूंगा गैलेगर इज अ वेरी पुअर मैन्स निको बरेला. इफ very poor man's Nico Barella, poor man's Mason Mount. That is what he is. I would not say he has potential, but quality अभी lack करती है बहुत. बहुत ज्यादा eager हो जाता है at times that he's not sure on the ball. He's not composed, calm on the ball, and that is an issue with Gallagher. He loses the possession very often. लेकिन वो अगर कोई करता है ना, he can become the third midfielder in the midfield, not the second midfielder. तो अगर आप सोच रहे हो, and Ziba is right, कहीं ना कहीं if Gallagher plays in a double pivot, it's a crime, it's a suicide. जो टुकल ने किया था with Gallagher, I remember that starting of the season last season. लेकिन Gallagher in this position is not too bad, but at the same time, are we all putting eggs in a basket for Nkunku और hoping कि Nkunku coming from a new league and अभी भी fairly youngish है. I know बहुत अच्छा season रहा है दो, but injury prone भी है. We are hoping against hope that he does that. Andros Santos definitely यार जी भाई, again बैकअप 11 भी हम कर सकते हैं. We are having a lot of players. कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कि midfield पूरी गायब है. There are certainly players, but for instance, as backups, we have a Chukwuemeka, we have an Andros Santos, you can say a Cesar Casadei. तीन में से मेरे ख्याल से एक या दो ही रहेंगे. I don't think all the three will stay at Chelsea. I think one or two will go on loan. Probably yes, Zibhai. Then I think I don't know what you guys. Kessie बोल रहे हैं. Kessie again, if he comes also, will he be a person who kind of elevates in terms of midfield? नहीं, with all due respect. And I like Kessie. Don't get me wrong. I like Kessie, but no. Uh, I hope he does that, Animesh. I hope he does that. If you get Kessie and Caicedo both, then you can play a midfield of Kessie, Enzo, and Caicedo. Nahi, Messi is good. That's the thing. That's the thing. Messi is good.
देखिए एंजो का द होल आइडिया अबाउट लेटिंग गो प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स वन थिंग दैट दे डिडंट वांट टू स्टे और सैलरी इश्यूज थे, वो सब थे, बट जो पैरिटी लाना चाह रही है न्यू डायरेक्टर्स सेट, बट एंजो फर्नांडिस को हम नहीं देखना चाहते एज अ लोन पिवट. दैट्स द होल पॉइंट. We don't want Enzo doing the defensive duties only. Enzo is a baller, bro. And one transfer मैं सच में खुश हूँ with Enzo Fernandez. He is worth every penny, bro. He's worth every penny. तो Enzo Fernandez, unleash him a little bit. He should be your second man. मतलब इसलिए you need a 3-man midfield. I'm saying more like a 4-3-3. ठीक है? You have a 3-man midfield जहां पर Enzo gets a little bit of leeway compared to basically a 4-2-3-1 जहां पर if you get a proper number 10 or a second striker, then Enzo will be ending up doing only the defensive work. Or if you keep Kessie and Enzo and Caicedo, तीनों are almost number 8 or number 6 है, but either of them are not people who would like to play as a single pivot. मतलब defensive minded totally नहीं है कोई भी. तो we need someone. I think Gallagher in this does not be very bad. Why? Because Gallagher is someone who can do the dirty work ahead of Enzo and Caicedo. You know, in a strange way, जो कांटे भी करता था at times. I know I'm trying to compare, but comparison नहीं करना चाह रहा हूँ at the same time. But I think we need someone with more legs and more defensive ability than a Kessie. And that's the whole point. Messi is good. Are United road in the house as well. Bye, shout out इनको भी. Still getting my head around the Jackson signing. We already had young unproven strikers with high potential, similar profile, probably needed similar experience, but who? That's the whole point यार. मतलब हम पता नहीं एकेडमी खोल रहे यार. चेल्सी एकेडमी तो है ही बवाल, एक और एकेडमी खोल रहे फर्स्ट टीम के साथ में, as much as they're promising, but they're not ready. अरे भाई जी भाई in the house, let's add him. एकेडमी खोल रहे फर्स्ट टीम के साथ में, as much as they're promising. Hi, Ankit bhai. Okay, मेरे ओपिनियन में the reason why Enzo was worth every penny was because the midfield was shit. So Enzo showed up. Of course. No two ways. अरे भाई लेकिन ईद मुबारक यार. जी भाई इन द हाउस. भाई जी भाई ओपी हो जाए इन द हाउस एवरीवन. एंड आई नो लिटरली मैं तो रैंट मोड में था. कहीं ना कहीं सेवियर जैसे आ गए कि भाई ठंडे हो जाए थोड़ा, आ जाओ, मैं आ रहा हूँ. क्लिफर्ड इज सेइंग रीस जेम्स अगेन प्रूव्ड. भाई जी भाई मैं तो आई हैव गॉट द पॉइंट. अगेन मैं हर 2-3 साल में बोलता हूँ ये चीज, आई हैव नॉट लाई, कि कहीं ना कहीं प्लेयर से प्यार करो ही मत भाई इतना. मतलब आई हैव गॉट टू दैट पॉइंट ब्रो. बात तो सही है. लाइक देख लिया हमने, लाइक लॉट ऑफ पीपल, लॉट प्लेयर्स के साथ ऐसा होते हुए देखा है. मतलब कम ऑन मैन, कोलिबाली विद 26 जर्सी भाई यार ज्यादा ही मतलब कम ऑन मैन, ये कुछ ज्यादा ही लग गया मुझे. लाइक ठीक है, उसको फैमिली को हेल्प करना है, अपने पूरे खानदान को हेल्प करना है, अपने पूरी सिटी को हेल्प करना है. दैट इज वेरी गुड. ऑस्कर 2.0 वेरी गुड. बट कम ऑन यार, एक कंपटीशन की भी बात होती है. एंड ही इज नॉट दैट ओल्ड टू जस्ट लीव टॉप लेवल फुटबॉल. एंड कोलिबाली वाला लाइक I didn't feel that was good. Obviously, ठीक है, Chelsea पे he was a bit surplus and maybe उनके tactics में fit नहीं हो रहे थे. And they have got Badeshir as well as the replacement. So Fofana भी है उनके पास. तो you know what, does the job. Thank you so much यार भाई लोग for the wishes. Eid Mubarak आप लोगों को भी. But Ankit भाई, going back to the 11 जो आपने बनाया, I think that's not a good 11 if you are fighting for the Premier League top 4. मैं वही बोल रहा हूँ. मतलब इमेजिन द साइनिंग्स. और मुझे लग रहा है सोबोस्लाई जा रहा है लिवरपूल. आई डोंट नो व्हाट आर थॉट्स ऑन दैट. सोबोस्लाई इंडस्ट्री लाता है. ही ब्रिंग्स अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस दैन द नेम्स दैट चेल्सी आर लिंक्ड विद. ठीक है, आई नो कहीं ना कहीं जर्मन लीग से यू आर ऑलवेज थिंकिंग ट्वाइस, जो हुआ है रीसेंट सीजंस में, इवन विद लिवरपूल टू बी ऑनेस्ट. जहां तक मुझे याद है केटा का भी हुआ था. बट मतलब वेयर डू यू सी सोबोस्लाई गोइंग? न्यूकासल, चेल्सी और लिवरपूल तीनों ही लिंक्ड है. I think Liverpool needs more. Liverpool needs a player like Szoboszlai more than anyone. But he won't be bad for Newcastle. He won't be bad for Chelsea as well. I mean, they need that great. But again, Liverpool मैं क्यों कह रहा हूँ? Because I think he could be that Milner वाला guy who could do the work rate, because work rate बहुत बेहतरीन है Szoboszlai का. He's also a creator from the midfield and probably that number 8 that they can use. But Szoboszlai more like a wide player मुझे बेहतर लगता है when he's operating on the wide channel. So probably how will they play now with Szoboszlai in the team of Liverpool? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वही सोच रहा था आज. यू आर एग्जैक्टली राइट. मतलब लुकिंग एट हाउ द वे लाइप्जिग हैज प्लेड ओवर द इयर्स, I feel that Szoboszlai comes across as very like similar to how Mason Mount operated under Tuchel. If you remember Tuchel, the way वो खेलता था 3-4-2-1 with Mason Mount playing that wideish player who kind of tucks into the midfield. ठीक है, जो Gabri Veiga भी हो सकता है, mind you. Gabri Veiga can also become that player exactly, to be honest. But if you're basically a Premier League owner, a Premier League coach right now, मतलब in world football आप देखते हो, for people who might be available, I genuinely believe how would you replace Mason Mount is a big question. And let's be real, as much as last season नहीं था,
Mason Mount was a hole even the last season at Chelsea, because that is something that Chelsea were building around the last previous 2 years. So we have to somewhere down the line replace that. अब अगर आपको Enzo को करना है अच्छा, तो I think you need someone with industry in that number 8 position. You cannot just have, like, with all due respect to Madison, industry में थोड़ा issue है, right? Yeah, definitely. I think Chelsea मैडिसन के लिए जाना, लाइक ही कुड बी द गाय जो कि माउंट को रिप्लेस कर सकता था. डेफिनेटली थोड़े से सिमिलर प्रोफाइल्स हैं उनके अटैकिंग मिडफील्डर्स बोथ ऑफ देम, बट चेल्सी स्पॉटिफाई पे आई थिंक दे नीड टू कवर एंजो पहले. How are we Correct. looking to do that? Matlab, Caicedo is the perfect pick, the right option. Declan Rice could have been the better option, but अब Rice is going to Arsenal. ठीक है, fine. Arsenal did a good job with that. I think Caicedo बचते हैं एक option यहाँ पे. फिर आपका सस्ता Bernardo Silva in terms of franc कैसे बचता है. And here, believe me, he could be a good pick for Chelsea as well. Not saying because I want him to leave Barca, but then again, I think एक pairing जो होगी इनकी, it would work very good. And even Chikwemeka as well, another guy जो कि ये मुझे ऐसा feel होता है कि his talent would be wasted. बंदा बहुत बेहतरीन है. I remember the time when he was linked to Barcelona एक कुछ चंद दिनों के लिए, I was like really psyched up because he's a he guy. has physicality. Chukwemeka problem क्या है ना, Chukwemeka मैं बोलूंगा जैसे Loftus-Cheek का issue था ना, when transitions में when he tries to kind of वो change of pace, Loftus-Cheek before injury was brilliant. After injury वो जो करना को कोशिश करता था, he used to trip himself. Chukwemeka has that thing. तो कहीं ना कहीं he has to still get used to, because आप देखो तो these guys, lot of these guys are still growing physically, and Plus he's young. Exactly. तो आप उसको स्टार्टर जैसा नहीं देखते हो ना, मतलब तो चुकुमेका, एंड्रे सैंटोस, these are all brilliant. और अगर आप केसी की अगर बात करो तो for me, मतलब having watched in Milan as well, the way that I see Kessie is like he's actually best when he's a little bit upfront in the middle three compared to the others. मतलब that is the best case. जो बार्सिलोना में भी he tended to do, but Barcelona the way they play, it did not suit him as much as what I would say. नहीं, तो वहां पर मैं देख रहा हूँ तो will it actually really help Enzo? क्योंकि yeah, that's where it comes in. Ankit bhai, if you would look at the midfield of Argentina, जहाँ पे Enzo खेलते हैं, he actually plays that in that team as a single pivot. Enzo plays there and McAllister and DePaul खेलते हैं. Why Enzo is fit over there playing as a single pivot is because of the work rate of McAllister and the work rate of DePaul together. So the whole midfield trio helps in defending. Well, obviously, international football is different to club football. You want to express yourself more, so आप थोड़े बहुत defensive sacrifices कर सकते हो with the setup and all. But Enzo kills over there, and Enzo when he's playing in that midfield, जब he बात ये है कि Scaloni has given him a bit of a freedom to go further forward as and when required. And जब वो करते हैं तो we see often कि the fullbacks stay a bit behind and even DePaul stays a bit behind, so that अगर disruption होता है, अगर ball lose करते हैं Enzo, so we'll have somebody to cover from the back. But Chelsea में if Enzo goes forward, there's nobody to come back and defend. And now that N'Golo Kante is gone, Kovacic is gone, then it leaves a huge space. And क्योंकि I don't know who else है ही would be नहीं the अब guy. तो literally, मतलब I'm telling you again, guys, and that is why basically I've been on rant mode from the last 48 hours. Mason Mount, Kante, यहाँ पर हमने 11 बना दी. Loftus-Cheek, then you have obviously Kai Havertz, and you have obviously मतलब N'Golo Kante को काउंट किया क्या पता नहीं, but basically Pulisic, Ziyech could also play that in the number 10 role at times. मतलब what I'm saying is those three positions के लिए basically हम 7 to 8 players we are losing, and that's something which was already in the plans. मैंने बोलूँ का नहीं था, but now with everyone going, we need someone to basically replace them, and मतलब एक leadership element भी चाहिए ना. तो Gabri Veiga के बात करनी मुझे, like how have you seen this guy in terms of the leadership aspect of it? क्योंकि 40 million is nothing if you ask me, if he has leadership as well. He's amazing. Ankit bhai, let me tell you, वो बंदा 21 साल का है, but मुझे लगता है कि उसका हमें चेक करना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, because he doesn't seem to be like a 21 years of age बंदा. वो जिस हिसाब से सेल्टा विगो को लीड किया है ना towards the end of the season as well, last match में he took it onto himself to save Celta from relegation. There was one job to do, defeat Barcelona, and scored 2 brilliant goals playing as a second striker in that game. एक 4-4-2 की orientation में they were playing, and he was playing along with the striker. And I think Gabri Veiga in terms of final third, he's amazing. But then again, यहाँ पे we have to understand what would Gabri Veiga do, and still he would not be able to compensate for the defensive troubles of Chelsea. मतलब Enzo के साथ he might not pair better, and still you would need another DM there. So you need Enzo, Gabri Veiga, and another DM to play in that role. Or Veiga is that he's that direct player. But then again, एक problem है, if you play a right winger whose natural tendency is to tuck in, cut inside rather than go wide, वहां पे थोड़ी सी problems हो सकती है, because Gabri Veiga likes to operate in that right half space of the zone. Right half space, okay, got it. Yeah. तो almost like a right-footed David Silva, मतलब कहीं ना कहीं I know it's big words, लेकिन नहीं कहीं ना seriously कहीं मुझे उसका मूवमेंट से वही दिखने को आया, क्योंकि because he can literally play everywhere, but he prefers that right half space वाला चीज, and that's something that we see with a lot of Spanish players as well. लेकिन
अगेन मैन सिटी आर इन द रेस यार, मतलब Even but Ankit bhai, you know what? Gabri Veiga, fine, he's there, he's proven, he has done a great job. ठीक है, पहला breakthrough season था, he did a fantastic job. Other pick, I know I'm going out of my way to suggest this guy, but क्योंकि given कि चेल्सी ने already ऐसी signings की हैं, it won't make a big of a difference to go for Arda Güler as well. He's that kind of a profile, a number 8, a number 10, proper number 10 बंदा, जो कि गाब्री वेगा की भी प्रोफाइल है, a highly attacking midfielder, but defensive work rate नहीं है दोनों ही players के पास, but then again we are not talking about that अभी इस point time पे, right? So either Arda Güler 17, even 20 million pounds पे, that's not a bad deal for Chelsea to get him, and definitely we have seen he could be the another version of Hazard at Chelsea because he's got that profile. नहीं, आई हियर यू, लेकिन वही है, मतलब एक ऑप्शन हो सकता है, आई नो वी आर कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। बाय द वे सब लोग अगेन यार बिग शाउट आउट, यहाँ पर मैं टैग भी करता हूँ भाई, जी भाई का दूसरा चैनल भी, आई नो ऑफ कोर्स भाई, आई थिंक 200 के रीच हो गया क्या आपका? नहीं ऑलमोस्ट देयर भाई, लेट्स गेट हिम टू 200 के यार, कम ऑन, ईद पर हो जाए एब्सोल्युटली। लेकिन साथ साथ में मैं बोलूंगा दैट व्हेन इट कम्स टू यू नो से अदर प्लेयर्स, मतलब एक चीज हो सकता है, या तो आप जाओ विद मे बी a couple of youngsters. Caicedo, we all forget he's very young. As much as we have been really impressed in the last 1 year, लेकिन साथ साथ में हम वही है, गैब्री वेगा का लास्ट ईयर सेल्टा विगो में, बीट आर्दा गुलर अभी, these are very young guys, और इवन चुकमेका, एंड्रे सैंटोस, एक हो सकता है आप पांचों को खिलाओ स्क्वाड में, कहीं ना कहीं that one spot will always be rotated, and whoever does the best, meritocracy आप रखो, and Poch has done that at Spurs. Can he do that at Chelsea? That's a big question. That's a big question, huge question in fact. But big question is अंकित भाई कि आपके पास options क्या है? Like who would you get in? अभी देखो Caicedo एक नंबर 1 पिक है. I mean they have to do. नहीं वो तो मैं ऑलरेडी काउंट कर रहा हूँ, हो गया तो बस खत्म, बस अपना भाई खत्म है. फिर like you have to go and वैसे एक और बंदा है like okay ठीक है, I wouldn't have suggested his name, but now क्योंकि ये deal off हो चुकी है, Edson Alvarez, he was going to go to Dortmund, but वो deal we off were linked as well last, exactly. I would say बाबा get him. मतलब अगर Caicedo नहीं होता है ना, Edson Alvarez भाई would form a great partnership over there. मतलब आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी डीप से डिफेंड करने की। जी भाई, लेकिन मतलब आई गेट योर पॉइंट, एंड आई नो एज एन बीइंग अ डच फैन एज वेल, हैविंग सीन अ लिटिल बिट मोर, आई एम टेलिंग यू दैट ही इज वेरी गुड। लेकिन हमने उसी विंडो में वी वेंट फॉर ज़कारिया, बिकॉज ज़कारिया वी थॉट ब्रिंग्स अ लिटिल बिट मोर फिजिकलिटी कंपेयर्ड टू एन एडसन अल्वारेज, तो हमने किया था, एंड देन ज़कारिया पॉच इज नॉट यू नो कन्विंस्ड विद दिस, इसलिए वी डिडंट कीप ज़कारिया। तो आई एम जस्ट सेइंग, गोइंग बैक टू दैट प्लान, नहीं फाइन, give the right signals to the midfield of Chelsea. But then again, you are anyways going for a Caicedo or could be a Veiga or could be anyone. But Edson Alvarez, I think Alvarez proven actually. He's proven. He's a baller, yaar, Ankit bhai, and he has held that DM position for Ajax for so long in Mexico. He's the sole guy coming in from the midfield. मतलब बहुत ही beast है वो बंदा. I think Ugarte को एक जो miss किया Chelsea ने, I think that was a bad miss जो Ugarte का miss कर दिया इन्होंने. तो in hindsight definitely yes. हाँ, अभी आप देखोगे ना, मुझे ऐसा फील होता है कि like if Chelsea miss out on Caicedo, Alvarez भाई it's a blessing in disguise. वो बंदे को आप ला ले, I mean कि भाई ठीक है, वो आपको ऐसा फ्लैशी नहीं ब्लिंग देगा जो आपको Caicedo मिल जाता है, आपको Caicedo पिच पे दिखा देता है करते हुए. Edson Alvarez is a very composed guy. I think I really like him, and खासकर क्योंकि Chelsea डबल पिवट में खेलेगी with Enzo, मजा आएगा. अच्छा, लेकिन मैं ऑन द अदर हैंड, ये ऑप्शन 1 है कि गो विद ऑल द यंगस्टर्स, ऑप्शन 2 इज बेसिकली गो विद अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस इन एडसन अल्वारेज देयर, हु बेसिकली मे बी न्यू टू द प्रीमियर लीग एज वेल. अब ऑप्शन 3 है, मतलब आई नो कहीं ना कहीं हम रैंक में बहुत कम आते हैं कंपेयर टू बार्सिलोना भी, एंड आई विल कम टू बार्सिलोना एज वेल एज मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटीज. हम जो गैब्री वेगा बात कर रहे थे, सिटी आर इंटरेस्टेड, सिमिलरली ब्रोजोविच, यार ये बहुत ड्रैग हो रहा है जो डील है विद अल नसर, इट्स गेटिंग ड्रैग्ड. इवन नाउ आई एम सीइंग अ न्यूज़ दैट they are not giving up Al Nassr, and Brozovic and Al Nassr are still on talks. मतलब एक जो एज फैक्टर है ना, Chelsea are not willing to invest in people who are closer to 30. Do you think this will come biting back to us? Because कहीं ना कहीं, yeah, exactly. It will. Yeah. But Brozovic, from his perspective, are we shocked at why isn't he choosing Barcelona? मतलब if I was Brozovic, I would have gone with it, yeah. He's choosing Barcelona, Ankit bhai. That's the reason why, solely because वो बंदा अल नसर की डील वो साइन नहीं कर रहा है. दो प्रॉब्लम्स हैं. पहले तो बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, और दूसरी बात है कि आप ब्रोजोविच को वो जो सैलरी जो उसको वहाँ पे मिलनी चाहिए कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स हु हैव गॉन देयर, वो उसको वहाँ पे मिल नहीं रही है. सो इज लाइक भाई एनीवेज आई एम नॉट गोना अर्न दैट मच ओवर देयर, तो भाई लेट मी प्ले एट द टॉप लेवल, होपिंग कि भाई बार्सिलोना जो एक्चुअल रूमर्ड वेजेस है, इट कुड बी 7 million euros.
नेट जो उसको मिलेगी, सो इट्स स्टिल अ गुड अमाउंट ऑफ वेज जो उसको वहां से मिल सकती है इंटर के कंपेरेबल, एंड ही वुड स्टिल बी प्लेइंग एट द टॉप लेवल, चैंपियंस लीग में वो खेलेगा, सो बिल्कुल। दैट्स द रीजन व्हाई ही इज होल्डिंग थिंग्स। अभी थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी बात करते हैं गाइस। आई नो दैट हम रैंट मोड में है चेल्सी के, भाई बेसिकली प्लानिंग कर रहे हैं, विल कम बैक टू इट। बट जी भाई, भाई फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हाउ आर यू सीइंग मेसन माउंट फिटिंग इन, एंड प्रीटी श्योर ही विल सी हिमसेल्फ एज अ स्टार्टर। Definitely, he will start. 60 million pounds. I think end of story हो चुकी है यहाँ पे for Sabitzer, and end of story for Donny van de Beek as well. And इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि मेसन माउंट की प्रोफाइल क्या है, कैसे वो फिट हो सकता है बंदा। चैनल पे वो वीडियो है, काफ़ी अच्छी रिसर्च वीडियो है वो। उसमें what I found was कि the way in which they can fit him is probably in a mid three, या क्योंकि यहाँ पे दे प्ले इन अ डबल पिवट विद एरिक्सन, कैसेमिरो एंड ब्रूनो फर्नांडिस इन द टीम. So Mount has to start alongside Casemiro. There's no other option. No other option for Yeah. him. Or he could be the replacement for Bruno Fernandes in the games जिसमें वो बंदा नहीं खेल रहा है. So I don't see Bruno not playing a game for United. It hasn't been like that. Never has been कि Manchester खेले और Bruno ना खेले. So Mount the third midfielder alongside Casemiro. Yeah, here comes a big catch कि भाई Mount को अपने गेम को अभी यहाँ पे evolve करना होगा. अब यहाँ पे it comes to भाई Mount, ठीक है, he played at Chelsea, he had Kante, he had Jorginho, but over here his responsibility increased a lot. So now we have to find out कितना mature वो बंदा बन सकता है. Yeah, exactly. मतलब अगेन, मतलब ये लाइनअप इज समथिंग व्हिच आई एम प्रोबब्ली सीइंग, लुक्स लाइक ओनाना भी वहीं जा रहा है जी भाई। आई थिंक टॉक्स हैव बिगन। आई नो इट्स नॉट बिटवीन इंटर एंड मैन यार यूनाइटेड येट, अंकित भाई, बट मैनचेस्टर did bad with De Gea. वेरी बैड, वेरी बैड, मतलब। मतलब एंड ही भाई इज अ लेजेंड, मैं साहब तो वापस बोलता हूँ, शॉकिंग. ही इज अ प्रीमियर लीग लेजेंड ब्रो, He मैं तो is a इतना Premier लेवल League पे legend बोलता हूँ। यार. He is. या एंड अगेन I फॉर mean पीपल even हु डू नॉट नो। Spurs did a better job with Hugo Lloris. एक्चुअली तो भाई क्या किया था ना, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड बेसिकली गेव हिम अ वर्बल यू नो काइंड ऑफ अ डिस्कशन दे हैड, और कहीं ना कहीं हामी मिल गई थी। He was already reducing his salary and extending his contract is what the agreement was in terms of verbal agreement. And then time passed, वो सोचा था भाई आएगा आएगा आएगा, साला आया ही नहीं contract, and he gets to know basically Manchester United want to sign him at an even lower salary, which is obviously saying that भाई तो निकल जा, time हो गया, you know, that's what it's clear, right? बाबा, I think Athletic ने रिपोर्ट किया था कि he signed that contract. He signed that मतलब contract जो कि it ऑफर was a था. verbal, yes, it was a verbal, it हाँ, wasn't like हाँ, a प्रोबेबली formal thing. वो, हाँ, वो फाइनल एक अग्रीमेंट नहीं था बिकॉज दे वुड हैव टॉक्ड अबाउट इट. इट वाज लाइक मे बी एक वर्बल एग्रीमेंट होगा या एक प्रोबेबली एक प्री एग्रीमेंट हो सकता है, व्हाटएवर इट इज. एंड इट इज शॉकिंग टू सी कि यूनाइटेड आर गोइंग बैक. इट टेल्स यू कि भाई कितने टॉप पे जो लोग हैं वो इनडिसाइसिव है, इतने इनडिसाइसिव है. एंड आई डोंट नो व्हाट हाउ ईटीएच इज टेकिंग दिस. Exactly. But again, let's be real. मतलब as much as we are saying that, साथ साथ में I think we have to give credit to ECTH that he's definitely done a lot of right things at Manchester United. नहीं, लेकिन वही है, मतलब we could have dealt better. मतलब अगर आपने रोनाल्डो को ऐसे कर लिया तो भाई डाविड या किस खेती हाँ, मूली है, बस कहीं वही ना कहीं, बात है. मतलब ETH आई थिंक वो डच मैनेजर का है भी, यू नो इट एग्जैक्टली, बीइंग अ बारसा फैन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो डच प्लेयर्स एंड डच मैनेजर्स एज वेल। डाविड को देखने को थोनी, ठीक है, जितना जीतना जरूरी, ओके, बेसिकली इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू बेसिकली लुक एट दाविड डिया, इट्स इंपॉर्टेंट टू विन, लेकिन देयर इज अ वे दैट यू डील विद लेजेंड्स इन माय ओपिनियन, नो कम ऑन डिसरिस्पेक्ट मैन, टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई जीतना थिंक जरूरी दैट। है, बट देन ऐसे ऐसे थोड़े कर सकते हो यार तुम कि एक प्लेयर से कहो कि यार तुम्हें साइन कर लेंगे हम, सब बढ़िया है, वर्बल एग्रीमेंट हो जाए और कल आप कहते हो कि नहीं यार इससे कम पैसे में हम जाएंगे. वाह. लेकिन जी भाई, मतलब डोंट यू थिंक सोशल मीडिया इज आल्सो टू ब्लेम, बिकॉज आई थिंक मगवायर चलो फिर भी ठीक है, लेकिन दाविड डिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ हेट। आई नो दैट मिस्टेक्स, बहुत क्लियर मिस्टेक्स थे इन द रीसेंट कपल ऑफ सीजंस, बट हाउ कैन पीपल फॉरगेट, लाइक आई लिटरली रिमेंबर David De Gea has kept Manchester United in relevance almost, मैं तो बोलना चाहूंगा, very strong statement है, but I think there were seasons वहां पर if David De Gea literally won them points and plenty season after season, ठीक है, He that was I their don't know. best player for I think 3 years in a row. Ankit bhai, when your goalkeeper is your best player for 3 years in a row, it tells you a lot. I don't want my team's goalkeeper to be the best goalkeeper. मैं नहीं Hmm. चाहता मैं बारसा पे हर साल टर स्टेगन को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दूं, नहीं यार, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ वी प्ले फुटबॉल. हमारी टीम में हमारा बेस्ट प्लेयर एक गोलकीपर हो रहा है, तो इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट गुड थिंग्स अबाउट योर टीम. तो यहाँ पे डेहिया, यू आर वेरी राइट अबाउट दिस, ही हैज केप्ट यूनाइटेड सम वेज इन रेलेवेंस. Hmm. बट एवरीवन, भाई सब लोग यहाँ बोल रहे थे जी भाई मेसन माउंट कमिंग बैक टू इट, देयर आर मिक्स्ड ओपिनियंस, मतलब ऑब्वियसली चेल्सी फैंस ऑलवेज रेटेड हिम, आई नो
लास्ट 6 महीने थिंग्स हैव गॉन भाई, ही इज लिविंग विद द बैड टेस्ट इन द माउथ, लेट्स बी रियल अबाउट इट, ठीक है. बट साथ साथ में आई थिंक अगर जनरल मार्केट सिनारियो होता ना, जैसे एक बंदा जैसे मेसन माउंट अवेलेबल है मार्केट में, pretty sure अगर Kai Havertz with all due respect is going for 65 million, Mason Mount would have also gone for that amount, generally speaking, because it's 1 year contract left में. People are saying that Manchester United overpay किया है. मतलब I would like to disagree. I don't know what your opinion is. I think we have probably got the right price for Mason Mount is what I would guess. राइट, हाँ मुझे लगता है सही प्राइस है. दैट्स अ वेरी गुड, मतलब एकदम बढ़िया प्राइस है बेसन माउंट के लिए. 60 इज अ गुड प्राइस फॉर माउंट. एंड पीपल लाइक often like they don't remember what Mason Mount used to be and what he is, and obviously last year hasn't been good. तो भाई values की जो drop हुई है but still 60 is a good value. Madison का यहाँ पे I would say कि भाई हाँ ये shocking था कि ऑब्वियसली लेस्टर भाई कितने ही प्राइस मांगेगी, तो 40 वाज लाइक काफी चीप डील फॉर मैडिसन, एंड एक्चुअली स्पर्स ने काफी अच्छा साइनिंग किया वहां पे. तो या फेयर अमाउंट है एब्सोल्युटली. बिल्कुल. या आई थिंक अगेन देयर आर पीपल और आर अग्रीइंग कहीं ना कहीं. आई थिंक इन हाइंडसाइट, और मैं नो ओपनली बोला जी भाई, मस्ट हैव सीन व्हेन आई वाज लाइव एंड रैंटिंग कि भाई मेसन माउंट एक चीज तो आपको कंप्लेन नहीं मिलेगा, दैट ही विल गिव हिज 100%. चेल्सी में नहीं हाँ दे रहा था इन द लास्ट 7 months बिकॉज वी नो दैट थिंग्स वर नॉट गुड पर्सनली स्पीकिंग विद हिम एंड चेल्सी बोर्ड. बट apart from injuries as well, or of course Chelsea में जो atmosphere था, I think he is someone that he will at least get a 7 out of 10 almost every week. He might not be a एब्सोल्युटली 9 out of 10 player, but he'll ना. get. मतलब मैं पर्सनली वुड प्रेफर, एंड दैट्स व्हाई मैं इतना थोड़ा सॉल्टी मोड में हूँ, but I actually personally believe those जो hard workers होते हैं, they don't get enough credit, and I think somewhere down the line losing in Aspilicueta again like a David De Gea, people forget what a legend of a player Aspilicueta is actually speaking for Chelsea, ठीक है. वैसे जो है मेसन माउंट could have been, क्योंकि वो इंडस्ट्री एज अ फैन ना, if you're a fan of a club, आई वुड रादर सी 10 साल बंदा दिया है क्लब को जो ऐसा बेसिकली हार्डवर्क किया इन एवरी मैच फॉर 10 years, rather than someone who's played brilliant football couple of years हो गया स्टेपिंग स्टोन जैसे देखा है, and he's moved लिया on. ना, दैट्स So नॉट अ लेगेसी नहीं. correct. बिल्कुल. क्रिस्टोफर इंकूबर आई एम देयर ब्रो. डेफिनेटली आर देयर एंड आई एम ग्लैड. मतलब अगेन बाबा साइनिंग्स के तू ही बारे है. में बोले तो मतलब क्रिस्टोफर इंकूबर को चेल्सी, हाउ डू यू सी, मतलब डेफिनेटली बॉलर, बट थोड़ा फॉरवर्ड इन चेल्सी ऑलवेज थोड़ा सा डर लगता है. मतलब वेयर इज, व्हाट इज योर ओपिनियन स्पेशली फ्रॉम जर्मनी? भाई ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड हैजंट बीन गुड, बट गिवन कि लाइक अंकुकू यार he is a talent यार, he's a talent. So was Kai Havertz man, but it all comes down to the proper utilization of Nkunku. मतलब कैसे चेल्सी, कैसे पोचेटिनो यूटिलाइज कर रहा है इसको. इज ही प्लेइंग एज अ कैम, इज ही प्लेइंग एज अ राइट विंगर, बिकॉज ही कुड प्ले एनी ऑफ दोस पोजीशन, राइट विंगर, कैम, स्ट्राइकर, वो बंदा कहीं भी खेल सकता है. तो अच्छा, इट उसने इज बोला है इंटरेस्टिंग टू खुद सी. कि स्ट्राइकर इज प्रेफर्ड पोजीशन इन हिज फर्स्ट या इंटरव्यू. या 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 स्ट्राइकर. तो भाई ठीक है तो भाई, आई थिंक इस पॉइंट टाइम पे ना दे शुड नॉट देखो, बिकॉज व्हाट आई नो in the Premier League, yeah, it's very important for you to dominate the games. And given Chelsea and seeing Pochettino, he's a guy जो कि basically likes to play with थ्री मिडफील्डर्स. उसको चाहिए भाई मिडफील्डर्स, प्रॉपर मिडफील्डर्स हो. तो यहाँ पे यू कुड सी कि नकुकू कैन बी योर स्ट्राइकर इज वेल, एंड यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड इन गैलेगर या फिर एनी अदर गाय आप देख सकते हो. एंड इट शुड बी लाइक दैट इन माय ओपिनियन. सो इट शुडंट बी कि निकोलस जैक्सन स्टार्ट करे, उसके पीछे नकुकू कैम खेल रहा है, एंड देन वी हैव डबल पिवट. You expect Nkunku to be that third midfielder as a cam? नहीं भाई, that would not work in my opinion. And I think striker number नंबर 9 नाइन मतलब. जर्सी, ओबा ओबा ने देखा है क्या हुआ. बट आई थिंक बिफोर मूविंग टू मैन सिटी एज वेल, थोड़ा बहुत दिबाला हैज अ रिलीज क्लॉज, आई नो, बट दिबाला जैसे पोजीशन अगेन, I think his position is one thing which is probably like thoda about old school, and not many teams play 4-2-3-1 with a proper cam. Do you think that is the issue, or do you think that jo 3-4-2-1 jo Tuchel khilate the is not too bad if you think about that, inside right forward he could fit in there. So why isn't, like, for example, I'm just saying for the sake of saying, because Bayern Munich linked thi Havertz ke sath before he went to Arsenal, why isn't Bayern Munich going for Dybala, you think? Just saying. They attack in pace, Ankit Bhai. They don't slow down the game. When they're on the transition, you see they often don't slow down, and they've got good passes the ball already. Kimmich unke pass. They've got the wingers who like to run with the ball. So don't stagnate the play when it is in the mid block. उनको ball मिलती है वहां से, they are basically running. वहां से वो भागते हैं, and they pass on, and then final third में जाके they attack. So वो काफी direct खेलती है Bayern. And with Tuchel, I mean, there could be a change in approach, but I think Bayern पे Dybala with his injury track record, I think it won't be the best pick, yeah. Felix is 70 million can be signed. मतलब
हाँ पता नहीं यार, मतलब गोइंग बैक टू सेम चीजें, मतलब यहाँ पर किसी ने मुझे याद दिलाया है, नो कहीं ना कहीं वो हेटर्स होते हैं सोशल मीडिया में, दैट फिलिक्स हैज गॉट इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्स एज किरियन ट्रिपियर गॉट फॉर न्यूकासल, एंड दैट्स एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स अ राइट बैक वी आर टॉकिंग अबाउट, बट फिलिक्स इज वेरी गुड. Is he worth 70 million pound हो रहा है पुदिन, तो 80 million euros, is he worth that? That's the big question. मतलब we are again doing a Kai Havertz, मतलब kind of, if you go back to it, that's why I would say that Pochettino might not go with it. मुझे लगता है, I doubt it. Too many interiors team में would make things confusing. I think इस point of time पे what Chelsea needs is a direct player, man. एक direct number 9, एक direct number 6. I think फेलिक्स को तुम लाओगे किधर खिलाओगे यार? तेरे पास उधर खिलाने के लिए कुकू है, और obviously Sterling when he plays he cuts inside. वो interior है ज़्यादा. I don't know man. मतलब he was a good player for Chelsea hands down, ठीक है. और बंदा still खेल सकता है एक 3-2-4-1 में the left sided interior, fine. But अभी इस point of time पे I don't see under Pochettino troubles. प्राइस टैग बहुत ज्यादा लग रहा है. बिल्कुल भाई, टॉक अबाउट प्राइस टैग्स. जोस्को ग्वार्डियोल मैन, अब राइस नहीं आ रहा, तो राइस वाला गेम तो भाई हो गया अब, तो प्रिटी श्योर सिटी जा रहा है जोस्को ग्वार्डियोल, आपने बात ही की थी आपके चैनल पर भी, बट नाउ दैट कोवाचिच हैज गॉन, गैब्री वेगा से लिंक्ड है, मतलब लेट्स मेक अ क्विक सिटी 11 एज वेल गाइस, व्हाट डू यू से, मतलब आई थिंक जोस्को ग्वार्डियोल डेफिनेटली स्टार्ट्स इफ ही गोस, एंड आई एम अज्यूमिंग ही गोस, क्या लगता है आपको? Definitely he starts 100 million signing, no problem. बंदा खेल रहा है ahead of Nethanaki. Howsoever Nethanaki good he performed last season. बहुत harsh है on Nethanaki. I can't believe कि like City are going for this guy. But the only thing is कि Pep always goes for change. He will always keep that competitiveness in the team, and that tells you कि Laporte is gonna leave. So it's fine, ठीक है. जैसे Laporte auxiliary एक on and off centre back के role में खेले हैं for City, so will be with Nethanaki. And Ruben Diaz, Akanji, Stones, Guardiol, Aki, I think these are going to be the players that they have. थोड़ा सा एक risk है that they don't have a natural right back in the team. If Kyle Walker leaves, the only guy would be Rico Lewis to play in that position. थोड़ा सा मुझे वहाँ पे एक risk लगता है. But let's see कि Kyle Walker will he leave or not. एंड बिटवीन मारेज एंड सिल्वा एक जन तो छोड़ेगा, मुझे लगता है, कौन सा छोड़ेगा? I think it would be Mahrez. मुझे लगता है Bernardo still has a lot to play, and I think he could do a good job here यार. बट अगेन वेयर डज कोवाचिच फिट? मुझे लगता है इट्स टाइम दैट हुलियन अल्वारेज डिमांड्स अ स्टार्ट यार. कोवाचिच मुझे नहीं लगता स्टार्ट करेगा. आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, और he'll not change the system. You think 3-2-4-1 ही जाएंगे with Kovacic playing the Gundogan role? I think Pep ले जाएगा 3-2-4-1 को ही आगे, because I don't see इस point of time पे there's any reason for Pep to change his ideas, to change his formation. I don't think so कि कोई reason है यहाँ पे Pep को ज़्यादा experiment करने का. He had a method of that was working, but yes, Gundogan के जाने के बाद से you could see like okay ठीक है fine, you know, Gundogan चले गए हैं. Now we can finally see a lineup जिसमें Alvarez and Haaland definitely खेल सकते हैं together. And I think Alvarez can play that. I think Alvarez सबसे best होता है when he's coming from the right hand side, but Alvarez can also play that left sided interior role. But मुझे perfect position जो लगती है Alvarez की, वो लगती है right hand side interior जो KDB पे खेलते हैं. So in the long run he could be that guy जो KDB का job कर पाए. और अभी इस point of time के लिए they could go in the formation जैसे आपने दिखाया 3-2-3-2 3-2-4 3-2-3-2. 3-2-3-2 Yeah, 3-2 with Alvarez 3-2-3-2. dropping back as well. हाँ, वो it could become a in the midfield. 3-2-4-1. Yeah, Exactly. वही रहेगा. It could be that. So क्योंकि the difference between Gundogan and Kovacic is like I think Gundogan is more natural goal scorer by far. तो वो एक थोड़ा डिफरेंस. आई नो कोवाचिच इंप्रूव भी करेगा काफी. ये भी मुझे इसलिए सॉल्टीनेस है वहां पर भी, मुझे क्लियर पता है. in the beginning I see Kovacic start, Ankit bhai. कोवाचिच स्टार्ट करेगा आपको लगता है? मतलब एक्सपीरियंस फैक्टर इन प्रीमियर लीग एंड ऑल. लेकिन यार सस्ते में लिया यार. मैं तो अभी सोच रहा हूँ, मतलब we all think 30 is like old bro, he's not even 30, and I know that कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, बट 25 मिलियन में लिया यार मैन सिटी ने. Kovacic, a guy who's actually won what 4 Champions Leagues if I'm not wrong. Man, it pains as a Chelsea fan यार. मतलब लेकिन क्या ही कर सकते हैं, it is what it is. Kovacic is a perfect replacement. नहीं perfect तो नहीं बोलूंगा यार गुफी. मतलब देखो गुंडोगन भाई, बारसा कंग्रेचुलेशंस यार जी भाई. आपने बात की थी शायद one day before we no the day we saw the match together. Gundogan here we go आया था यार. Gundogan here we go था. अरे बहुत खुश हूँ मैं तो भाई. तो भाई Gundogan is going to take Barca to the next level. Let's be real. As much as I love a Gavi, लेकिन Gavi बेंच पर रहेगा अब. अभी रहना चाहिए. ठीक है. और
Kovacic is good. Certain thing like carrying the ball as well as basically dribbling from midfield. He's probably better than Gundogan, I would say. हाँ. Lekin in terms of being at the right place at the right time, the awareness, the understanding of the game, by your reading of the game and leadership अब qualities, scoring, Gundogan. अब देखो ना, Gundogan, अब देखो Kovacic, how he used to play at Chelsea. He always had a Felix. He always had a Mason Mount ahead of him. Yeah, bilkul. So he wasn't utilized in those aspects of the game, and often he would score those bangers arriving in the box. But over here at City, if we are looking him to actually fit in the direct spot of Gundogan, that's a whole new position for him. He has to बिल्कुल. start his game there. He has to be Croatia के there. लिए भी Pasalic, if you know, he's Pasalic, not like a yeah, right winger. He actually plays like a second striker or midfielder a was. cam at हाँ times. हाँ 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 Exactly. हाँ. So he Cam, comes Cam's the internally. best. So he's Exactly. that So guy. agreed. Don't you think City should invest on a natural DM rather than relying on Stones for the entirety of the season? Calvin Phillips will stay, bro. Messi is goat. Yeah, वो Calvin नहीं Phillips is जाएगा still बस. there. राइस अगर आता तब जाता. अब Calvin हाँ. Phillips is there and Rico Lewis could also play that role. Rico Lewis is Yeah. that. I think knowing Pep, I think he'll probably say it's time that Rico Lewis is your first change. Be it at right back अगर आपको change करना है formation, or be it in defensive midfield. I think he can do both the roles. Apart from Calvin Phillips being there, Foden को भी start करना है. Yeah, that's a good point, Animesh. He'll probably demand a start. I think भाई अगर वो साहब. 3-4-1 जाते, I actually agree with this point. Animesh बोल रहे हैं. At this point, I think Foden may start over Kovacic. Yeah. Because he can do a lot of dirty work. People don't realize he actually is not Yeah. too bad in that. So I would go with that or Alvarez, one of the two. But anyway, a lot of conversations हमने किया यार भाई. हमने discuss किया Manchester United, Chelsea, Man City. भाई before ending, I just want to take a quick opinion. कल पता नहीं आपने सुना है कि नहीं. I went on total rant mode. आज तो फिर भी ठीक है. थोड़ा सा mellow down है यार. थोड़ा सा खुन्नस है. जी भाई has a soft corner for Arsenal, whether he likes it or not. We all know that. आर्सेनल की बात मेरा ये ओपिनियन था जी भाई. थोड़ा सा हार्श होगा, थोड़ा सा भाई आर्सेनल फैंस लुक अवे. बट मुझे लगता है ना, एंड क्रेडिट टू एडू, क्रेडिट टू आर्टेटा, क्रेडिट टू आर्सेनल फॉर द वे दैट दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, द वे दे आर एम्बिशियस इन द ट्रांसफर विंडो. वो दिख रहा है, क्लियर है, एक प्रोजेक्ट है, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन मेरा यही था कि भाई आर्सेनल टू काइंड ऑफ attract a Kai Havertz from a Chelsea. I know पैसा बोलता है, but apart from that, to attract a Kai Havertz from a Chelsea, a Champions League winner with Chelsea, going to a London fellow rival, and to get basically Timber, चलो फिर भी ठीक है, but of Declan Rice, दो बंदे जो दोनों इंटरेस्ट रख रहे थे in Bayern Munich. To get that, somewhere down the line, Man City, I think pulled out because उनको शायद चाहिए ही नहीं था Declan Rice इतना. And I felt Man City almost was saying कि भाई Declan Rice Arsenal चल जाए तो चलता है. We don't want Declan Rice going to Chelsea or Manchester United or even Bayern Munich. I actually feel that. What do you feel that? I know थोड़ा सा मतलब people might feel that, come on, as in that's a bit too much to think about, but मुझे लगता है that why would Declan Rice say no to the clubs that he was linked with, apart from the fact that he wants to stay in England. Matlab, with no disrespect to Arsenal. Better opportunities at Arsenal, maybe. Clear project idea at Arsenal. Better convincing power from Mikel Arteta, probably. हो सकता है Mikel Arteta ने 10 कॉल किया हो Declan Rice को and Pep ने 2 ही कॉल किया हो. And I think now given एक बात we have to realize कि Kai Havertz signing was done. So Declan Rice can look up and see, okay, fine, this team is actually building. And अगर वो 70 Kai Havertz के लिए खर्च कर सकते हैं, and they're going to go for, I can join them, and definitely I can see this team to get better. And probably अपने वो playing minutes भी देख रहे हैं वहाँ पे. Arsenal पे he will be a definite starter. Ban, I don't think so he was ever going to go to Ban. वो उसके इंटरेस्ट में नहीं था. He felt कि भाई वो घर पे रहे, इंग्लैंड में ही खेले. And very rarely we see English players going away. तो I think इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यस, दोनों ही टारगेट्स, आई मीन एक तो चेल्सी का प्लेयर साइन किया, एक चेल्सी का क्लियर कट टारगेट भी था डेक्लन राइस, काफी टाइम से वो लिंक भी थे पिछले 2 साल से. तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द कन्विक्शन एंड ऑल्सो एक चैंपियंस लीग का भी है. मतलब अगर चेल्सी और आर्सेनल की अगर बात करो आप, तो चेल्सी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, काई हेवर्ट्ज के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट था कि भाई उसको चैंपियंस लीग में खेलना है, तो ही वेंट टू आर्सेनल. सेम गोस फॉर डेक्लन राइस एज वेल. सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ. देखिए मतलब why are these players, maybe it's a new thing, new generational kind of player thinking, why is the short term, मतलब again with all due respect, अभी भी मैं बोलता हूँ going and playing the Champions League with Arsenal I think is a lesser chance of winning the Champions League than going and playing for Bayern Munich, for instance. Kai Havertz के चक्कर में तो भाई he is actually a German as well. Right, I mean
इतना सॉलिड इंटरेस्ट नहीं था बायर्न का. दे वर लिंक्ड बट आई डोंट थिंक सो कि एनी ऑफर केम फॉर काय हेवर्ट्स. नहीं, लेकिन तालियां दुआ से बजती ना, मतलब यू नीड टू यस शो यस बैक दैट यस. इंटरेस्ट इज वेल कहीं ना कहीं, एंड जो वहां पर जो अमराबाद के साथ हो रहा है बार्सिलोना का सिनेरियो, भाई दोनों केपेबल है बट भाई ऑफर बारसा कर ही नहीं रही है. ही इज वेटिंग टू से यस. अमराबाद बोल देगा यस जैसे ऑफर आएगा. तो सेम गोज विद इट. सेम गोज विद बायर्न म्यूनिख एज वेल. दे वर लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. आई थिंक yes, this guy Rice was one of them. Kai Havertz was also one of them probably. But एक कोई considerable offer नहीं आया. And I think Kai Havertz was like fine, ठीक है, after jump ship. कौन सी टीम है जो साइन करना चाह रही है? I think आर्सेनल ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया. And we also know कि भाई how they are gonna set him as well. इसके बारे में हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी बात की है. I think बहुत बढ़िया, like good for Kai Havertz as a decision to join the team of Arsenal. अब चेल्सी एज अ टीम एंड काय हेवर्ट्ज की जो रिलेशन विद चेल्सी, आई थिंक वो तो डेफिनेटली थोड़े से खटास हो चुके हैं. बट काय हेवर्ट्ज के पर्सपेक्टिव से दैट वाज अ वेरी गुड जंप, वेरी गुड लीप स्ट्रेट अवे टू आर्सेनल. एंड उनकी टीम को और बोस्टर करे, अटैकिंग थ्रेट बनाए. एंड आई नो आर्टेटा विल प्ले हिम इन हिज नेचुरल पोजीशन. वो उसको खिलाएगा, वहां पे उसका बेस्ट नहीं, आज निकालेगा. बोल दिया दैट ही इज एक्चुअली टर्म्ड हिम एज अ मिडफील्डर. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यस, ही स्पोक वेरी अबाउट गुड. हिम. तो बट बस कल हमने बनाया था, वी वर थिंकिंग दैट नहीं, काय हावर्ट्ज माइट प्ले अगेन एज अ फॉल्स नाइन, व्हिच इज नॉट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, बट आई नाउ आई फील नहीं, ही माइट गो इन द 4-3-3 with Odegaard and Kai Havertz, and then you might have Declan Rice doing the dirty work as much as he would like to do more. If he's taken that role at Arsenal, maybe he wants to become that leader in midfield, and maybe he's doing that. But kahin na kahin, I again would feel that, with no disrespect, bro, everyone, I genuinely believe that Kai Havertz, even Declan Rice to some extent, obviously would have won more trophies, and I believe also he improved as footballers more under Tuchel at Bayern yeah. than at Arsenal. लेकिन again, it's a personal choice. डेफिनेटली. अब वो ट्रॉफीज तो भाई क्लियर है. 3 ट्रॉफीज तो बांध के रखी हुई हैं घर पे. लाइक यू गो देयर, बुंडेसलीगा आपका है, ठीक है. नो टीम इज गोना कम्पीट अगेंस्ट यू टू विन एनीथिंग. तो बुंडेसलीगा आप जीत रहे हो, नो प्रॉब्लम, नो टू वरीज अबाउट इट. बट देन इट्स अबाउट अ होल, इट्स अबाउट अ बिग चेंज. मतलब इंग्लैंड से जर्मनी जाना, मतलब फॉर काय हेवर्ट्ज दैट मेक्स अ बिग सेंस बीइंग अ जर्मन. That's why I was या in Randport last night, because I आई डू think अंडरस्टैंड. because दोनों ही, in fact तीनों ही, even Mason Mount to some extent ना, हाँ. there was a little bit of interest. ऐसा नहीं था कि नहीं था, मतलब there's no smoke without fire वाला चीज द ना, थिंग कहीं इज ना कि कहीं. यहाँ पे यू सी बिडिंग वॉर्स हो रही थी. द प्रॉब्लम वाज कि बान वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड, क्योंकि वो उनके साथ टीम से काफी सारे सेल हो रहे थे. लाइक लुकास हर्नांडेज टू पीएसजी हो रहा है, and they were waiting to wrap up that Kim Kim Min Jae Min-jae, wali deal. yeah. So they couldn't pay a big attention to Kai Havertz and Mount and जो Dice के साथ जो deal चल रही है, and they kind of went slow with it. And we were in a Kai hurry ना, Havertz, because we had to get yeah, off players before 1st of July. yep, that's the thing. But anyway, देखते हैं यार, मतलब देखते हैं प्रतीक. All the best यार to Arsenal fans, all the best to Manchester United fans, and of course City fans. But अभी के लिए भाई the saltiness continues until we sign Caicedo and another midfielder. लेकिन all the best to Barca यार, जी भाई. I think Barca are back. I genuinely believe एक और signing चाहिए midfield में, and I think you will DM definitely be back. DM बाबा, DM चियान, सबसे एक्साइटेड हूँ मैं किसी के लिए तो मोर देन गुंडोगन एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. आई थॉट मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं गुंडोगन के लूंगा. बट गाइस हु हैव सीन मी लाइव स्ट्रीम पे हम बात करते हैं, आई टोल्ड यू गाइस कितने बार, विक्टर रॉके आना है. विक्टर रॉके आना है बाबा. एंड आई एम सो हैप्पी भाई, वी हैव साइंड दिस He can be गाय a great एंड impact of the bench. Great impact. बूम. अरे भाई बहुत खतरनाक, मजा आ जाएगा. बिल्कुल. चलो देखते हैं अब. एनीवे भाई, मच लव टू एवरीवन who's joined again. Emergency stream था in the night because you know what happened, breaking news about Mount. But जी भाई मिलते हैं यार again. ईद मुबारक. बहुत शुक्रिया. Much thanks यार for coming on for अरे on short notice as well. लेकिन अभी के लिए इतना ही है. You all know that no matter what, up the Chelsea, but all the best to all the club fans कहीं ना कहीं. And we'll be back कल. I think we'll be live on Almighty Sports. लेकिन क्विक शॉट आउट यार, जी भाई के टॉक बॉल ईटी को भी चेकआउट करिए इन केस आपने नहीं किया. भाई बहुत लोग देख रहे हैं, मैंने ये भी पता है, बहुत लोग लाइक नहीं किए, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए. भाई guys, it's just a press of a button. Do it on Almighty Sports, Almighty Blues, Talk Ball HD as well as Talk Ball ET. Talk Football HD is, I think, Qatar pe. I think 200k is just about coming, so hopefully we'll get there with all your help in the this week before Pochettino comes to Chelsea. Put it that way. लेकिन चलो guys, much love. बहुत शुक्रिया अंकित भाई, एंड बिग अप गाइस. मिलते हैं, पीस आउट यार.